Welcome everyone. And we are live. Yes, we are. Welcome once again. And आज के शो में अच्छी बात क्या होने वाली है? That the discussion is open to the audience. You can join the discussion. I'll just Yes, the joining link is there in the chat. जिनको भी ज्वाइन करना है आज ज्वाइन कर सकते हैं, बट प्राइमरीली आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? अबाउट दिस, हाउ all roads lead to flat earth. तो सबसे पहले बिफोर वी इवन स्टार्ट, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे कवर करना है वो है रिगार्डिंग फ्लैट अर्थर्स मेकिंग सम स्ट्रेंज statements like the earth is not actually flat. And this is something that I discuss in one of my previous live shows. So once again, आज 23rd September है, and I think I started live streaming last year on this date. अभी चेक करके मैं देख लेता हूँ अपने ही चैनल पे. So मेरा जो पहला लाइव था it was on 24th September 2022. We have come a long way. एक साल में यहाँ पे जितने सारे, भले ही नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे लाइव शोज़ के, बट एक लाइव शो मेरा एवरेज 2 घंटे का तो होता ही है. काफ़ी सारे इसमें 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबे हैं. आज वाला लाइव शो भी नियर अबाउट 2 घंटे का ही मैं सोच के रखा हूँ अभी तो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कौन ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं उस पर डिसाइड होगा कि कितना लंबा एक्चुअली होता है ये शो. बट द गुड पार्ट इज़ सारे लाइव शोज़ में एटलीस्ट 3 डिजिट में व्यूज़ हैं. मैं अपने लाइव शोज़ में ही बोलता हूँ कि व्यूज़ के वजह से तो आई डोंट डू दिस. इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ लाइक माइंडेड पीपल फॉर मी ऑन सोशल मीडिया. एंड इन द प्रोसेस व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू मीट लाइक माइंडेड पीपल, तो एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे फ्लैट अर्थर्स भी मिले जिनका मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता है कि क्या सीन है. अपने आप को फ्लैट अर्थर्स भी बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम दे से थिंग्स लाइक अर्थ इज़ नॉट रियली फ्लैट, देर आर माउंटेन्स एंड वैलीज, सो वी कैन नॉट say that the earth is actually flat. It isn't really flat. तो इस पॉइंट को एड्रेस करना सबसे पहले ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो स्लाइड रखा है. बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. सबसे पहले जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको एक फ्लैट वॉल, उन्हीं के घर में कोई भी अगर दीवार वो देखें, कोई भी वॉल को अगर देखें, तो क्या उस वॉल का सरफेस फ्लैट है ये वो मानेंगे? वट अबाउट अ टेक्सचर्ड वॉल? आजकल जो डिज़ाइनर और नाइस टेक्सचर्ड वॉल्स आते हैं, वॉल में टेक्सचर है, तो ये लोग तो बोलेंगे नहीं यार, दिस वॉल इज़ नॉट फ्लैट. सो वट दे आर एक्चुअली डूइंग इज़ कन्फ्यूजिंग द वर्ड स्मूथ विथ फ्लैट. जो आप टेक्सचर की बात कर रहे हो, दे आर प्रोट्रूजन्स फ्रॉम द फ्लैट सरफेस, विच इज़ वाई यू आर कॉलिंग इट अ प्रोट्रूजन, because in order to measure it
You need to have a flat baseline of the wall, which is going to be a straight line when you measure it from one end of the wall to the other, and overall the entire plane of the wall is flat. जो भी उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर आप चेक करो इन रियली स्मूथ वॉल, तो भी आपको अंडुलेशंस नज़र आएंगे. और मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक टेक्सचर्ड वॉल को क्या आप बोलोगे कि नहीं दिस वॉल इज़ नॉट फ्लैट, बिकॉज दैट वुड मीन कि इट इज़ कर्व्ड. अगर हम ग्लोब अर्थ, फ्लैट अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्लैट नहीं होने का मतलब है ग्लोब अर्थर्स का बात मानना कि इट इज़ कर्व्ड. यू आर नॉट डूइंग anyone any favor. Yes, you are doing globe earthers a favor by presenting yourself as a stupid flat earther. And वही मेरा point रहा है मेरे लाइव स्ट्रीम्स में, जितने भी सारे मैंने किए हैं, and most of them have been on the topic of science. and लाइव स्ट्रीम्स में एटलीस्ट मैं टॉपिक से बहुत ज़्यादा इधर उधर डिविएट करनी नहीं करता हूँ, जो कि आपको अदरवाइज़ मेरे पहले के 2 साल 3 साल पहले के वीडियोस में देखेंगे कि वी कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, इधर उधर की बातें रिलेटेड टू फ्लैट अर्थ, बट नॉट डायरेक्टली हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन द अर्थ बीइंग फ्लैट और नॉट. वो सब फ्लैट अर्थ जानने के बाद आगे के musings हैं among flat earthers who have realized that the earth is flat, who know that the earth is flat measurably and obviously and observably, and after that they are wondering ki why would they lie. So एक स्विमिंग पूल का सरफेस पे आप एक कंकड़ फेंक दो, then the surface is no longer flat according to these numpty flat earthers. So they like to call themselves true earthers or real earthers, but not a flat earther. Anyways, उनकी जो भी रीजनिंग है, पता नहीं, अपने आप को तो वो जस्टिफाई कर लेते हैं, बट आई वंडर कि उनको पता भी है कि फ्लैट अर्थ का मतलब क्या होता है. उन्होंने कभी ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट के बारे में सुना भी है. उन्होंने कभी सेलेस्टियल नेविगेशन बीइंग अ प्रूफ ऑफ फ्लैट अर्थ, इस चीज़ के बारे में सुना है कभी? आरविन को सब समझ में आ रहा है. आई डोंट गेट इट हाउ आरविन गेट्स इट, बट जितने भी अभी लिसनर्स हैं उसमें से आरविन. सो आरविन, इफ़ यू आर लिसनिंग, tonight's an open panel. Yes, it is already night here. It would be evening there, but just in case you want to come here and share your views, you're most welcome, Arvin. And I totally get what you're saying in the comments. And I don't understand how you are able to understand every bit of what I am saying. Yes, the text is there to help. Still, you get it. Yep. That's the point. Because the earth has mountains and valleys, it is not flat. My God. Isn't that what Nathan and the panel were talking about just the other day? I think yesterday only. Anyways, माउंटेन का कोई हाइट मेजर करने के लिए, कोई माउंटेन आप बोल रहे हो कि अरे माउंटेन तो वो तो अर्थ पे है, वो तो फ्लैट नहीं है, उसका तो कुछ हाइट है. तो वो हाइट एक कोई रेफरेंस पॉइंट से हम मेजर करते हैं. यू नो व्हाट दैट रेफरेंस पॉइंट इज? द फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ, द हॉरिजॉन्टल इक्वेटोरियल प्लेन, सी लेवल से मेजर करते हैं. हर एक लैंड पॉइंट में क्या लिखा रहता है इंडिया में, कोई भी रेलवे स्टेशन में? MSL, meters above sea level, right? So above a level surface, जिसमें कि लैंड में कभी वैलीज आती है, नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, लेकिन ये नीचे ऊपर का जो भी मेट्रिक्स है, मेजरमेंट है, ये आप एक फ्लैट बेस लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हो. जब उस फ्लैट बेस लाइन से नीचे चले जाते हो तो नेगेटिव हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ अबव इट, इसीलिए हम 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स अबव सी लेवल की बात करते हैं. और यही एग्जैक्टली बात मैंने
अपने ही एक वीडियो में करी थी, विच ऑल्सो हैज़ अनदर कनेक्शन टू माई प्रीवियस लाइव स्ट्रीम, ये वाला विद चाणक्य तिवारी ऑन हिज चैनल। मेरे चैनल पे तो मैंने अपलोड किया 3 डिजिट व्यूज़ हैं, बट चाणक्य के में 4 डिजिट व्यूज़ भी हैं उसमें। एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज ऑल दैट वी टॉक अबाउट is elevation angles destroying the globe. And basically, just like Nathan keeps saying, I also got the opportunity to tell a globe earther that you are being educated by a flat earther. And it was actually the case. He did not know celestial navigation, he did not know elevation angles, and he, most importantly, he did not even know what GP stands for. सो एनीवेज, उसके एंड में मैंने जो प्ले किया था अपना 10 मिनट का वीडियो, जिसमें कि हम बात करते हैं उसी चीज़ के बारे में, सेलेस्टियल नेविगेशन एंड एलिवेशन एंगल्स के बारे में। सो वो जो वीडियो था, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रीवियस लाइव स्ट्रीम ऑफ माइन, विच इज़ दिस वन। इसमें हम बात करते हैं, एंड आई वाज जस्ट वॉचिंग दिस पार्ट which is from how much 6 months ago, and यही एग्जैक्टली बात जो अभी तक मैंने बोली, फ्लैट अर्थर्स जो जिनको लगता है कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट उनको मैं उस टाइम पे भी एड्रेस कर रहा था। सो जस्ट हियर फॉर अबाउट 2 minutes यहाँ पे फ्रॉम माई ओन वीडियो 6 months ago। उसके बाद हम मुद्दे पे भी आएंगे, सिर्फ पॉइंट पे बात करते हैं। 1 second, आई लेट मी प्लग इन माई ईयरफोन्स ताकि ऑडियो क्लियर आए। ऑल गुड, यस। ये ग्लोबर के साथ बात करने में, उसको प्रूव करने में कि क्यों अर्थ ग्लोब नहीं है और कैसे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ 100% अनडाउटेडली फ्लैट, राइट। सो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम खुद तो समझ रहे हैं, हम खुद तो मानते हैं कि येस इट इज़ एक्चुअली फ्लैट। बहुत सारे लोग अभी भी टैग के बारे में सोचते हैं कि फ्लैट अर्थर का टैग, आई डोंट लाइक दिस टैग ऑफ फ्लैट अर्थ, आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ फ्लैट अर्थर। और ये जो टर्म है फ्लैट अर्थर, ये कहीं ना कहीं उन्होंने हाईजैक कर लिया है। एंड टेक्निकली ऑल्सो द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बिकॉज वी हैव हिल्स एंड वैलीज एंड वट नॉट। सो ये भी एक बहुत ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फ्लैट अर्थर, कि आप अपने स्टैंस को ही छोड़ दे रहे हो कि हाँ आई एम अ फ्लैट अर्थर हु थिंक्स दैट द अर्थ इज़ नॉट रियली फ्लैट। I don't know what that even means, but the earth is actually flat. बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स का मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप इधर उधर आर्ग्यूमेंट सुने हैं कि what is the strongest argument that the earth is flat? And the strongest argument, there are people who respond to that by saying how they try to hide the true creator from us is the strongest evidence. This, I don't, the logic escapes me. You know who this numpty was? The same numpty I exposed in this one, Mr. Red, Code Red. Anyways, let's not digress. So, now that we have dealt with this very important issue of flat earthers thinking that the earth is not flat, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जिनको भी ज्वाइन करना है लाइव स्ट्रीम, आप डायरेक्टली आके बात कर सकते हो। लेकिन आज के स्ट्रीम में हम जो बात करेंगे वो मोस्टली फोकस्ड होंगे इन पॉइंट्स पे, विच आर द सेम क्वेश्चंस जो कि नेथन ओकली अपने फ्लैट अर्थ डिबेट पे थ्रू आउट द वीक फॉर द पास्ट 6 or 7 years डे इन एंड डे आउट करते आ रहे हैं। एंड दीज आर द मोस्ट पोटेंट फ्लैट अर्थ आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी फ्लैट अर्थ
फ्लैट अर्थर को जब दिक्कत महसूस होती है ग्लोब अर्थर से डील करने में या फिर किसी नए ग्लोब अर्थर को बताने में, तो सबसे जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं वो अगर आपको समझना है ताकि कभी ये डाउट ना हो या फिर कभी आपको फेंस में नहीं रहना पड़े जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ सनसेट्स एंड सनराइजेस वर्क ऑन फ्लैट अर्थ। बहुत बहुत वैरायटी के लोग मिलते हैं, अलग अलग बिलीव्स रखने वाले। बहुत सारे लोग अटके हुए हैं कि आई कैन नॉट प्रीच समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, एंड सिंस आई डोंट अंडरस्टैंड sunsets and sunrises, how sunsets and sunrises work on a flat earth, I'm not in a position to make a claim that the earth is flat. Only when I have all the answers, only when I have a replacement of gravity, just like so many others do in the flat earth, calling themselves flat earthers, तो उनके जैसा फिर एक एक्सप्लेनेशन, भले ही उस एक्सप्लेनेशन में कुछ दम नहीं हो, कुछ मतलब नहीं हो, हॉलो हो, लेकिन फिर भी एक रिप्लेसमेंट तो चाहिए भैया। और इसीलिए डेविड वाइस आते हैं चाणक्य तिवारी के चैनल पे, आधे एक घंटे तक क्या बात करके जाते हैं कि देखो उनके टेबल टॉप पे भी वो सनसेट्स सिमुलेट कर सकते हैं। और बिल्कुल भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाउ डज़ इट रिफ्लेक्ट ऑन अ फ्लैट अर्थ argument, because there are so many flat earthers who claim distances to the sun. But here on Flat Earth Debate and on my channel आपको यही सुनाई देगा कि I don't know the distance to the earth, to the sun, and neither am I claiming anything about it. जो claim करता है burden of proof उस पे है. So the moment you also claim any distance to the sun, even as a flat earther, I am going to ask you, you being a flat earther, how did you come up with the distance to the sun? I have done it to so many flat earthers who claim to have a distance, but जब अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि it's the same fallacy. Out of the boiling part water into the fire. अभी अभी समझे कि हाँ, जो क्लेम्स प्रूव नहीं कर सकते हैं वो क्लेम्स पे नहीं मानना चाहिए, बट अगेन खुद क्लेम्स करने निकल गए रिगार्डिंग समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रूफ। ग्रेविटी में गुरुत्वाकर्षण बोलो, संकर्षण बोलो, या इवन बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स शेयर करते हैं, आई डोंट नो वेदर दे एक्चुअली अंडरस्टैंड इट और एंडोर्स इट, बट शेयर करते रहते हैं जिसमें कि ये सब बातें लिखी हुई हैं, लाइक इनकोहेरेंट डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन प्रूव्स द फ्लैट अर्थ। दिस इज माइंडलेस पैरटिंग इवन आफ्टर बिकमिंग अ फ्लैट अर्थर। एनीवेज, बहुत सारे डिविएशंस हैं जो कि हम एक एक करके आगे के लाइव शोज़ में लेंगे। आज के केस में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन वीडियो ऑफ नेथन ओकली। और वो दिस लास्ट वीक नेथन ओकली के चैनल पे जो भी डिबेट्स हुए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फ्लैट अर्थर के लिए, जो सच में लुकिंग फॉर आंसर्स वाले फ्लैट अर्थर्स हैं, ट्रूथ सीकर्स वाले फ्लैट अर्थर्स हैं। स्पेशली एक ट्रैप जिसमें वो पड़ जाते हैं इवन आफ्टर बिकमिंग अ फ्लैट अर्थर, उस ट्रैप से बचने के लिए। सो फ्लैट अर्थ के सारे प्रूफ्स इतने डिटेल में पिछले एक हफ्ते में डिस्कस हुए हैं नेथन ओकली के फ्लैट अर्थ डिबेट में, जिसमें से कि पहला सेलेस्टियल नेविगेशन हो गया, दूसरा ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट हो गया, उसी में रिफ्रैक्शन भी आता है, एंड देन गैस प्रेशर विदाउट अ वैक्यूम, आई एम सॉरी, गैस प्रेशर विदाउट अ कंटेनर, और इवन अ वैक्यूम विदाउट अ कंटेनर, इट्स द सेम थिंग, you can't have it.
तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके, यस अ लिटिल बिट ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट ऑल्सो, सारे के सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, जिनका ग्लोब अर्थर्स जब आंसर करेंगे तो यही सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बोला वो सब लाने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट साइंस इज़, यही सब कुछ डिस्कस करते हुए नेथन ओकली ने एक ऑलमोस्ट 5 घंटे का वीडियो अपलोड किया था। सो पॉसिबल नहीं है एक बार में कवर करना वो पूरे वीडियो को, बट उसमें इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू गो स्लो अबाउट इट। एंड मे बी आज से मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर हो तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेम लाइव स्ट्रीम इन टू द नेक्स्ट वन। सो ये जहाँ पे ख़त्म होगा, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और उसी वीडियो में उसके आगे का हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन फिर से बोल दे रहा हूँ, आज का डिस्कशन इज़ ओपन टू द ऑडियंस, जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पिन कर दे रहा हूँ इसको, जो मीटिंग लिंक है दैट इज़ इन द पिन्ड कमेंट, बट यू विल हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। इधर उधर की बातें, बेकार की बातें नहीं करेंगे। पॉइंट पे अगर आपको कुछ बोलना हो, अपने व्यूज़ शेयर करने हो, या कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस हो दैट डू नॉट टेक अस टू मच अवे फ्रॉम द टॉपिक, देन मे बी हम डिस्कस कर सकते हैं। कमल मोगा भाई ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सैल्यूट सर। सल्यूट आपको भी सर। डोंट कॉल मी सर, ब्रदर। चलो, नाइस टू हैव यू हियर। अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा था। फ्लैट अर्थर्स, जो जिनको ये लगता है कि अर्थ इज़ नॉट रियली फ्लैट। ऐसे भी हैं। यही देखना बच गया था, बिकॉज अर्थ हैज़ हिल्स एंड वैलीज ना, तो इट्स नॉट रियली फ्लैट। So, on which thing are hills and valleys situated? On which thing are they located? वाई ना, फिर मतलब वाई आर दे कॉलिंग देमसेल्व्स फ्लैट अर्थर्स, या फिर फ्लैट, आई डोंट थिंक दे कॉल देमसेल्व्स फ्लैट अर्थर्स, लेकिन फिर भी अजीब ही स्टैंस है ये भी, नहीं? वो पॉइंट मैंने एड्रेस कर दिया, एंड नाउ आई कांट। Kevin, switch off the TV बेटा। तो अभी यस, आपको कुछ बोलना है, कोई पॉइंट आप लेकर आए हैं या किसी चीज़ के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली आपको बात करनी है तो बोल सकते हैं कमल भाई। मेरे को पर्टिकुलरली तो कोई बात नहीं करनी, बस लास्ट टाइम जो पॉइंट था, आपका नेटवर्क लूज हो रहा है कमल भाई। when hello, am I audible now? यस, नाउ यू आर। अभी आ रही है आपकी आवाज़। अब आवाज आ रही है। Because हम्म। last time you and I suppose चाणक्य भाई हाँ हाँ, were grilling a person named, I suppose, वो क्या नाम था उसका यार, जो पता नहीं शक्ल नहीं दिखा रहा था। आरजे किंग नाम था, लेकिन उसका असली नाम भी पता है मुझे। अच्छा, ग्रेट यार, ग्रेट। अब बहुत जरूरी हो गया कि लोगों की ना शक्ल देख के डिस्कस करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि लोग बर्तर इतने डरे हुए हैं कि अपनी शक्ल दिखाने में भी डरते हैं, क्योंकि किसी चैनल पे कुछ कर रहे हैं, किसी चैनल पे कुछ कर रहे हैं। अच्छा है आपने उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो अच्छी बात है जी। मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने उस चीज पे कभी सोचा नहीं था। वही वाला कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल की जो बात चल रही थी, जो उनको समझ में नहीं आ रही, और एंगल तो ऐसी चीज है कि भाई जो परपेंडिकुलर डाला है उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। सोचो, सेलेस्टियल नेविगेशन की बात हो रही है, तो मुझे भी वो पॉइंट खड़का कि भाई जो अगर आप बेस से हॉरिजॉन्टल चलते जाओगे तो क्या होगा, उसका मतलब क्या है, क्लियर पता लग रहा है उसको। तो इतना छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है भाई,
तो इसका मतलब हमने जो मैथमेटिक्स भी अगर पढ़ा है तो बस वो पढ़ा ही है, उससे ज्यादा सोचा नहीं कि उसका एप्लीकेशन कहाँ करना है। बस वो फिर वो 90 डिग्री का एंगल बना के वो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हम्म। वाला। बिल्कुल बस वो सबसे। फॉर्मूला ही सॉल्व कर पाएंगे शायद जीवन में आपको सब पाएगी बस ना। वही है हम्म, कि प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को देखो तो भाई इससे सिंपल चीज़ और क्या हो सकती है। मैंने जो 10 मिनट का बिल्कुल। वीडियो जब मैं प्लग कर रहा था चाणक्य में कि मेरे चैनल पे 10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, तो मैंने उसमें यही बोला था कि आपको बस बोलना है ग्लोबर को ये 3 बातें कि क्या तुम मानते हो कि लाइंस स्ट्रेट होते हैं, एंगल्स मेजर करने के लिए 2 लाइन चाहिए। ये दोनों सवाल का जवाब जब उन्होंने यस और यस दिया, और तीसरे जवाब सवाल पे आके हम लोग एक स्टार का एंगल मेजर कर रहे हैं यूजिंग 2 स्ट्रेट लाइंस, इसमें वो अगर ना हम्म, बोल रहे हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है कि भाई ज्योमेट्री पढ़ के आओ, एंगल्स क्या होते हैं सीख के आओ, स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं सीख के आओ, इसके अलावा और क्या बोलेंगे। बात ख़त्म है ना। सो इतना सिंपल प्रूफ है ये। इसीलिए बेस्ट मैंने वहाँ पे चाणक्य को भी रोक के इसीलिए पूछा कि आप बताओ पहले कि फ्लैट अर्थ का प्रूफ पॉजिटिव आप क्या दे रहे हो। उसके बाद फिर मैंने अपना बताया कि सी हाउ सिंपल इट इज़, सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं है, देन इधर उधर की बातें करना या ज़बरदस्ती ये दिखाना कि पॉइंट वो नहीं समझ रहा है या उसने कोई पॉइंट में फ्लॉ खोज लिया है। इतना सिंपल चीज़ है, हर एक इंसान जो ऑडियंस में देख रहा होगा वो समझ रहा होगा, तो उनको भी तो पता लग रहा है ना कि यार ये कितना बेवकूफ़ है कि इसको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है कि जो बेसिक्स बेसिक्स आप उठा रहे हैं उसके अंदर, उससे इंसान खुद बैठ के सोचेगा यार मैं जो पढ़ के आया हूँ और बात तो बिल्कुल ठीक हो रही है। है। और जब बात ठीक है तो फिर अब वो ईगो क्यों अड़ रही है उसको स्वीकार करने में। बस। जो सत्य है वो जो दिख रहा है और जो समझाया जा रहा है, अब वो समझाने वाले की उम्र मत देखो, उसका डेजिग्नेशन मत देखो, ना उसकी कोई रैंक देखो। भाई तुम वो देखते रहोगे तो मून और सन पे कभी ना कभी फिर तुमको पहुंचा ही दिया जाएगा, जैसे पहुंच गए हैं लोग कहीं, और कईयों की तैयारी हो रही है। नहीं तो वो वो गेम चलता रहेगा। ईगो पे आ गई थी बात, वो आपने भी नोटिस किया होगा क्योंकि एंड में जाके वो खुद मुझे बोल रहा है कि यार तुम्हें सेलेस्टियल नेविगेशन नहीं पता है। और जबकि पिछले आधे घंटे का सीन क्या था कि एक एक करके मैं उसे एजुकेट कर रहा हूँ कि देखो सेलेस्टियल नेविगेशन का मतलब ये होता है, एलिवेशन एंगल का मतलब ये होता है, और जीपी का मतलब होता है ग्राउंड पोजीशन ना कि ग्लोबल पोजीशन। तो यही है उसकी ईगो पे लगी थी बात। बट तभी वो अपने तभी वो लोग अपना फेस दिखाने को तैयार नहीं होते क्योंकि वो अगली बार पकड़े जाएंगे। बट ये भी है। बट वो ये हम्म, नहीं समझते हैं कि आवाज़ भी एक चीज़ होती है, वॉइस भी एक चीज़ होती है, उसको भी बहुत आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो राइट। शक्ल आप छुपा लोगे लेकिन आवाज़ कहाँ छुपाओगे, या इतना बिल्कुल अगर मेहनत बिल्कुल। करते हो कि आवाज़ बदल के आएंगे तो फिर तो भाई बनता है आपका। हम्म। तो तपस भाई एक बात पूछूं, हाँ हाँ पूछिए ना। on a personal note, श्योर। in case you don't want to answer that, no issues। ओके गो ये जो अहेड। आप कर रहे हो, हम्म। जो आप कर रहे हो ये, इससे मिल क्या रहा है आपको? ऑनेस्टली क्या मिल रहा है आपको? कभी सोचा इस पे? पता नहीं, बस कर रहा हूँ, पीस ऑफ बस माइंड मैं वही मिलता है। चीज, पीस ऑफ पीस ऑफ माइंड। माइंड। मतलब ये तो कंफर्म है कि जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, वो आपको किस नजर से देखते होंगे वो तो है ही है। वो तो है ही है, मतलब वो जो नेगेटिविटी मिल रही है, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती होगी, शायद 5% पॉजिटिविटी भी मिलती होगी कहीं से। लेकिन फिर भी ऑन ए पर्सनल नोट की अल्टीमेटली जब इतना कुछ नेगेटिव देख चुके हो और मिल भी रहा है और पता भी है कि नेगेटिव ही मिलना है, जूते ही पड़ने हैं, उसके बाद भी ये क्या चीज कंटिन्यू कर रही है? मतलब क्या चीज जगा के रखी हुई है कि यार मुझे कंटिन्यू करना है इस चीज को? क्या चीज है वो? सी बहुत सारे मोमेंट्स लाइक दीज आए थे पिछले वाले डिबेट में। मोमेंट्स ऐसा। लाइक दोज आई चेरिश, यू नो, इट फील्स गुड टू बी राइट। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और हम्म, आप उसको बोल रहे हो अभी तुम गलत हो, तुम्हें नहीं पता है, ये है वो है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों के बीच में भी होता है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी होता है, एंड देयर इज़ सम ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड, राइट। आपको पता है कि हम्म, उस झगड़े में दोनों तो सही नहीं है, क्योंकि दोनों तो एकदम अपोजिट बात कर रहे हैं। वो कुछ किसी और चीज़ के सपोर्ट में है, आप किसी और चीज़ के सपोर्ट में हो। नाउ द ट्रुथ इज़ ओनली हम्म, वन, एंड आप दोनों को वो ट्रुथ जब डिस्कवर हो गया तो मानना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे आप मान लो कि एक दोस्त के साथ भी जब झगड़ा होता है और फाइनली आप गूगल करके देखो
मैं बोल रहा था। तो वो जो फीलिंग होती है आप सोचो, अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे मेरे पहले के 5 साल 6 साल जब नया नया फ्लैट अर्थर बना था, तो दोस्त थे जिन्होंने बहुत एकदम, जो होता है ना कि ख़त्म हो गया दोस्ती और वो सोचने बिल्कुल लगे कि मैं पागल हो गया हूँ। बट फिर बाद में वही दोस्त आज के डेट में फ्लैट अर्थर्स हैं। आज के डेट में वो फ्लैट अर्थ की वजह से दुनिया के बारे में बहुत ग्रेट। कुछ समझ रहे हैं। तो बताया ना कि मुझे उससे वापस जाके बोलना भी नहीं, देखा मैंने बताया था, वो हार्ट में है मेरे कि तुम सच से कहाँ भागोगे, मेरे से तो भाग लोगे, सच से कहाँ भागोगे। सो दैट्स वन फीलिंग विच आई ऑलवेज सीक। एंड वो जो सीख करते हैं ट्रुथ, उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि ट्रुथ जानने वाला इंसान ही तो आपको बोल सकता है कि देखो मैं बोल रहा हूँ ये सच है। एंड वही क्लेम कर सकता है कि जब तुम खुद भी पता करोगे तो तुम भी इसी सच तक पहुँचोगे। Otherwise, I'm going to point out how you were wrong or how you were flawed in your approach that you did reached at some other conclusion. Right? So यही अनदर जो, क्वेश्चन, लास्ट बिल्कुल, क्वेश्चन। गो अहेड प्लीज। जब से रिसर्च किए और जब से आप मतलब एक कन्विंस्ड हो गए इस चीज से कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, एनक्लोज्ड भी है, अगर आपको चीज है कि ऊपर से बंद भी है, हम बाहर जा नहीं सकते हैं कहीं पर भी। जब से ये हुआ मतलब ऑन ए पर्सनल नोट लाइफ में क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में ऑन ए पर्सनल लेवल, नॉट दैट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रूव अदर्स, पर्सनल लेवल पे क्या हुआ है एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको क्या लगा कि आप में कुछ चेंज आया उसका? मैंने इसके बारे में अपने 3 साल पहले के वीडियोस में बहुत बात करी है। तो और पिछले 1 साल में लाइव शोज़ में ये सारे पॉइंट्स मैं लाना छोड़ दिया हूँ जानबूझ के, इन ऑर्डर टू फोकस ओनली ऑन फ्लैट अर्थ, नॉट व्हाट कम्स आफ्टर दैट और बियॉन्ड दैट। बट सिंस आपने अभी पूछा है तो मैं जवाब तो बिल्कुल दूंगा कि प्लीज। कि क्या बोलूँ मैं कि मुझे क्या मिला है। इन शॉर्ट, जो बहुत ही क्लीशेड आंसर है फॉर फ्लैट अर्थर्स टू हियर, आई फाउंड गॉड। ग्रेट। उसके पहले मैं एथियस्ट हुआ करता था एंड ग्रेट। प्राउड ऑफ इट। समझ रहे हो कि अपने आप को दूसरों से बहुत स्मार्ट समझने वाला एथियस्ट, कि जो फालतू की चीज़ें गॉड और क्रिएशन ये सब चीज़ें मानते हैं उनको साइंस नहीं पता है। और अब जाके मैं जब एक एवोल्यूशन वाले को या ग्लोब अर्थ वाले को बोलता हूँ कि तुम्हें साइंस नहीं पता है, तो समझ रहे हो कि व्हाट अ फ्लिप लाइफ हैज़ टेकन। तो वो आज के डेट में अपना सारा ईगो तो मैं घोल घोल के पी गया हूँ ना, क्योंकि मैं एक टाइम पे खुद वो चीज़ हुआ करता था जिसको मैं आज डिबेट कर रहा हूँ और एक तरीके से गाली दे रहा हूँ कि कितने बेवकूफ़ हो तुम। तो समझ रहे हो वो चेंज मेरे में आया है ना। वेयर एग्जैक्टली इट हैज़ टेकन मी मे नॉट बी पैलेटेबल टू मैनी, बिकॉज दैट सेम विगर एंड सीकिंग ऑफ ट्रुथ टुक मी टू फ्लैट अर्थ। और वही चीज़ फिर मुझे अल्टीमेटली बाइबल तक लेके आया, एंड द गॉड ऑफ द बाइबल। अब यहाँ पे जाके चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती है, इसीलिए अभी मैं थोड़ा इससे साइड में रहने लगा हूँ, आई डू नॉट नो ब्रिंग इट अप। सो नो इश्यूज। बट यू अंडरस्टैंड कि उससे पहले गॉड डिड नॉट मेक सेंस टू मी, एंड राइट नाउ आई थिंक आई हैव फाउंड गॉड। इससे आगे और जाने का ग्रेट। कुछ है नहीं। एंड फ्लैट अर्थ वॉज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। आप समझ रहे हो कि फ्लैट अर्थ बहुत सारे लोगों के लिए अल्टीमेट ट्रुथ हो जाता है, बट आफ्टर रीचिंग गॉड मुझे पता चला कि फ्लैट अर्थ वॉज अ स्टेपिंग स्टोन इन ऑर्डर टू रीच हियर, एंड देयर इज़ नो वेयर आई कैन गो फ्रॉम हियर, कि आप भगवान से आगे और राइट। कहाँ जाओगे, पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। टुडे दैट मींस द वेरी फर्स्ट लाइन व्हेन यू सेड ना कि वो क्लीशेड आंसर है, मुझे पता नहीं था क्लीशेड आंसर क्या चीज है। ये पता था कि जो लोग बोलते हैं, और आपका भी आंसर वही था जब वो आपने बोला ना आई फाउंड गॉड, तो दैट मींस माय हेयर स्टूड एन एंड। तो आई दैट मींस आई शट माय आईज। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं मतलब फील करता हूँ कि फ्लैट अर्थर्स का जो अल्टीमेट जो गोल है वो भी समझ में आता है क्या चीज है, जो बिल्कुल कन्विंस्ड है इस चीज से, कोई डाउट नहीं है उनके मन में। और अब उसको आप शेमलेसली कर लो, कॉन्फिडेंटली, जो भी उनको कहना है, क्योंकि ग्लोब अर्थर्स बहुत कुछ बोलते हैं उनके बारे में, बोलने दो, कोई क्या फर्क पड़ता है। मतलब इसको जानने के बाद जो लाइफ में चेंजेस आए हैं ना, वो बस उसको आप उस पर किताब लिख सकते हो आराम से बैठ के, हम्म, क्या क्या हुआ मेरे साथ। बहुत कुछ वो है है इसके अंदर।
स्पेशली पिछले हम्म, 3 साढ़े 3 साल में हमने जो दुनिया में चीज़ें देखी हैं, उस सिचुएशन में आप सोचो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉड से आप गिफ्ट मांग सकते थे वो था डिसर्नमेंट। इन सिंपल टर्म्स, listen, आइज़ टू सी। कि उस टाइम पे और कुछ right, नहीं चाहिए था, पैसे और ये और फलाना ढिमकाना कुछ नहीं काम आया था, बस आप समझ पा रहे हो कि नहीं कि क्या झूठ है क्या सच है। और वो चीज़ फ्लैट अर्थ नहीं दिया था ना। तो उसी के वजह से मैं उस हाँ, पूरे ड्यूरेशन में दुनिया कहीं और चल रही थी और मैं कहीं और चल रहा था, बिकॉज मुझे सब नज़र आ रहा था बिल्कुल। साफ साफ। सो आई ऑल ओ अ लॉट टू फ्लैट अर्थ, इसीलिए ये डेडिकेशन बस है। माय क्वेश्चंस, ऑल माय क्वेश्चंस एंड एग्जैक्टली exactly. ग्रेट। ऐवे ही नहीं फ्लैट आर्थर बन के फिरता हूँ मैं। तो एनीवेज, चलो, सो नाइस टू हैव यू कमल भाई। थैंक और यू, थैंक यू। नाउ आई विल गो बैक टू माय ओन प्रेजेंटेशन। इफ़ यू वांट टू स्टिक अराउंड आप रह सकते हो, आपको बीच में भी अगर कोई पॉइंट्स होंगे प्लीज, तो आप बोलना। बट वही राइट, सेम प्लीज। पॉइंट, एलिवेशन एंगल, ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट, हम वही सिंपल पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। वेस्टर्न फ्लैट अर्थर, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एंटी फ्लैट अर्थर्स हैं, अपने आप को प्रोफेसर्स बुलाते हैं, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर डेव, वो तो एक्चुअल का प्रोफेसर भी नहीं है। दिस वन इज़ अ रियल प्रोफेसर। और वो आके कैसे बोलता है कि इट कैन नॉट वर्क ऑन अ ग्लोब, अल्टीमेटली उसको मनाते हैं ये लोग। सो हम वही थोड़ी देर अभी डिस्कस करेंगे। एंड ओरिजिनली ये वीडियो तो है 5 घंटे का, मैं इनमें से बस ये कवर करने वाला हूँ पहले 1 घंटे का कंटेंट। तो राइट, मैं आपके लिए भी यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। प्लीज। होप यू कैन सी इट, है ना? या या आई एम ओके, एबल टू। चलो, वेरी प्लीज। नाइस। अपना तो एक ही उसूल है। सो ये बेसिकली नेथन ओकली का एवरीडे इंट्रो है, जिसमें कि वो बात करते हैं यही सारे 6-7 पॉइंट्स जो मैंने अपने पीपीटी में डाले थे, वही पॉइंट्स इसके इंट्रो में हैं, राइट। और वो वाला पार्ट सिंस हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसीलिए उसको स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। You know, if you cover it, then that means I don't have to watch it later. तो मिच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अगेन अ वेरी नाइस यूट्यूब चैनल, जिसने फ्लैट अर्थ के ये सारे जो प्रूफ्स हैं, ग्लोब को डिबंक करने वाले पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से अपने चैनल पे कवर किया था, मिचेल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और उसी ने प्रोफेसर फिल के साथ एक कॉन्वर्सेशन किया था, जिसको कि अभी नेथन ओकली एंड पैनल रिव्यू कर रहे हैं। सो टेक्निकली हम जो अभी कर रहे हैं, इट इज़ अ रिव्यू ऑफ अ रिव्यू। तो लेट्स बिगिन। Have you not watched it? Hold on a sec. There it is. It's in Skype right now. We took this non-electric road bike and converted it into an e-bike using... I'll just go through one more time for those in the back. You have a 90-degree angle from the celestial body to the surface of the Earth. With a sextant, you measure an angle, 2 straight lines, from the celestial body to the visible horizon. And then you correct for the height, the dip correction above sea level. And upon doing that, that angle that you just took with the sextant is put firmly on the surface of the Earth. This is the #1 flat Earth proof. Don't mention 90-degree angles. Don't mention elevation angles. Don't mention parallel vertical lines. Those two, the zenith and the GP, 2 vertical lines, all only possible on a flat surface. It is a glorious time to be a flat earther. It is a glorious time to know the truth of our world, to be involved in this conversation right now. Because globe believers don't want to be involved in this conversation. They don't want to add things to the conversation. They just want to add harm. They want to
insert logical fallacies that we're already living on a globe. Make no mistake, we are pulling the strings. The talk, the narrative that we're talking about right now, the sextant, is only here being talked about by flat earthers and by anti-flat earthers because we wish it to be talked about. We are pulling the strings. We called it the number one flat earth proof. And they bit hard. The last couple of months, telling us all about the 90-degree zeniths, the 90-degree GPs, only available on flat earth. Telling us all about elevation angles, only available on flat earth. Telling us all about not needing the horizon or a dip angle correction. Because guess what? If you don't need a dip angle correction, if you're using something like a bubble sextant, if you're using something like the artificial horizon, you are measuring a geometric flat plane above the surface of the geometric flat plane that we dwell upon. And we're going to go through that. So, इसको मैं ब्रीफली थोड़ा बात करता हूँ इसके बारे में. समझ में तो आ ही रहा होगा आपको बहुत क्लियरली कि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. बट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि पहले ही क्लैरिफाई कर लेते हैं. एंड वन ऑफ देम इज जब हम होराइजन की बात करते हैं, ग्लोब अर्थर्स कीप फ्लिप फ्लॉपिंग बिटवीन दिस होराइजन. अब एक चीज़ होती है जियोमेट्रिक होराइजन. जियोमेट्रिक होराइजन का जो क्लेम है, इट इज़ ओनली देयर फॉर द ग्लोब अर्थर्स. फ्लैट अर्थ में होराइजन इज़ नॉट जियोमेट्रिक. यहाँ पे जियोमेट्रिक वर्ड का मतलब ये हुआ कि यू आर क्लेमिंग दैट द होराइजन is the physical obstruction of the curvature of the earth, blocking our view. That's why you always provide ships going further away as the proof of flat earth, right? कि जैसे जैसे शिप दूर जाता है तो पहले उसका बॉटम गायब होता है, फिर पूरा शिप गायब हो जाता है. That according to them is a proof of the globe, right? Because the ship is going over the horizon to the other side of the hill, the hump ऑफ वाटर. तो वो हम्प इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो कि ये एक स्फीयर है ऑफ 6400 किलोमीटर्स रेडियस. तो उससे उस स्फीयर के अकॉर्डिंग एक पॉइंट आएगा जब आप अपने पॉइंट से, अपने ऑब्जर्वर हाइट से होराइजन पे लाइन ऑफ साइट आपका जो ज्वाइन कर रहा है ऑन अ ग्लोब, इट इज़ अ टेंजेंट at the horizon, which you are calling the geometric horizon, right? अब geometric horizon को क्या चीज़ डिस्प्रूव करती है? The black swan argument. क्या है black swan argument? Let's have a look. पहले के PPTs में मेरे तो हैं ही, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली क्वांटम इरेजर के चैनल पे जाके globeterminator.com, let's hear it right from the horse's mouth. globeterminator.com में जाके फ्लैट अर्थ प्रूफ्स में सबसे ऊपर तो सेक्सटेंट आता है, जिसके बारे में पिछले ही वीडियो में हमने बात करी थी. सेलेस्टियल नेविगेशन, एलिवेशन एंगल्स, मेजरिंग एलिवेशन एंगल्स यूजिंग अ सेक्सटेंट. आज के वीडियो में भी बात होगी इसके बारे में, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक स्वान. इफ़ यू क्लेम दैट ऑल swans are white, then all that I need in order to prove you wrong is a black swan. And this here is a black swan image. क्या प्रूफ करता है? इन शॉर्ट, मोडस टोलेंस आर्ग्यूमेंट में हमने पुट करके इसको डिसप्रूव किया है. अभी जो मैंने बात समझाई
ग्लोब अर्थर्स का क्लेम होना ही पड़ेगा, होना मांगता है, अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम ऑफ of Earth being a sphere with a radius of 3959 miles. So if the Earth, if P, then Q, not Q implies not P. ये मोडस टोलेंस है, जिसमें कि P स्टेटमेंट क्या है कि अगर अर्थ स्फीयर है 3959 माइल्स का तो होराइजन विल बी जियोमेट्रिक बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें कि आप ऑब्जर्व करना कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्जर्वर्स हाइट इन फीट ये ऑलरेडी गिवन है. सो वंस अगेन जब आप क्लेम करते हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा अर्थ दिखने लगता है हमें, सो दिस थिंग इज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हियर. ठीक है, आफ्टर फैक्टरिंग इट इन द होराइजन मस्ट बी नो मोर देन दिस डिस्टेंस. और इस कैलकुलेशन के हिसाब से दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ वीडियो जिसमें कि ऑब्जर्वर हाइट था 1 फुट, तो मैक्सिमम डिस्टेंस टू जियोमेट्रिक होराइजन वुड हैव बीन 1.22 माइल्स. लेकिन विथ रेफरेंसेस टू दीज प्लेटफॉर्म हिल हाउस एंड प्लेटफॉर्म हैबिटेट, दो नॉन मेजर्ड डिस्टेंस सी में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें दिख रहा है कि जो होराइजन है वो उसके भी बियॉन्ड है. दैट मीन्स कि जो हमारा Q स्टेटमेंट था in the black swan argument that every horizon distance measurement must be no more than 1.225 times the square root of observer's height in feet, उस चीज़ को ये पिक्चर debunk करता है. Now obviously it's a very common statement, again very cliched, जो कि flat earthers बोलते रहते हैं कि we see too far. We see too far is a very vague statement because far is a very subjective word. You need to put numbers over there. तो वही पॉइंट है बेसिकली, लेकिन उसी का रिफाइंड वर्जन है. अगर आपको पुट करना है तो वी सी टू फार इज़ ऑलरेडी अज्यूमिंग हाउ फार यू शुड बी सीइंग ऑन द बेसिस ऑफ सम जियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ द ग्लोब अर्थ, राइट. सो इसीलिए डज नॉट मैटर वी सी टू फार और टू नियर, बट जो हमें दिखना चाहिए इससे ज़्यादा दूर में हमें होराइजन दिखता है, और उस चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलना पड़ेगा कि होराइजन इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस विच द कैलकुलेशन ऑफ योर ग्लोब अर्थ डिक्टेट्स, राइट. जियोमेट्रिक होराइजन, जो कि अर्थ कर्व कैलकुलेटर में जाके आप पुट करते हो ना नंबर्स कि होराइजन कितनी दूर पे होगा. नेथन ओकली कॉल्स इट begging the question, proof of nothing, perspective hijacking, earth curve calculator. Chalo, I did pretty well. Begging the question, proof of nothing, perspective hijacking, earth curve calculator. ये सारे जो उसके पहले क्वालिफायर्स गिवन है, you need to understand, बहुत important है वो. Begging the question because you are calculating the curvature of the earth. You have already assumed that there is a curvature. So you are begging the question. Proof of nothing, because just because you put some numbers in a mathematical formula does not prove that the same amount of curvature is actually out there in the sea. It only exists on your computer screen. It's not reality. So begging the question, proof of nothing. Perspective hijacking, वेरी इंपॉर्टेंट. उनका जो अर्थ कर्व कैलकुलेटर है उसमें जो भी वो कैलकुलेशंस करते हैं या डायग्राम्स में दिखाते हैं कि शिप देखो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है और एक पॉइंट के बाद गायब हो जाएगा, ये सारे कैलकुलेशंस में कहीं भी इस चीज़ को फैक्टर इन नहीं किया जाता है कि जैसे जैसे शिप दूर जा रहा है वैसे वैसे उसका साइज़ भी तो कम हो रहा है. तो उनके डायग्राम्स में वो बोलते हैं ना कि फ्लैट अर्थ पे वाई कांट आई सी न्यूयॉर्क फ्रॉम पेरिस और हेयर टू देयर, जो डिस्टेंसेस की वो बात करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैलेसी, बिकॉज दे नेवर फैक्टर इन दैट थिंग्स गेट स्मॉलर विद डिस्टेंस. एक शिप हमेशा उसी साइज़ का नहीं रहेगा जब वो आपसे दूर जा रहा है.
जैसे जैसे दूर जा रहा है उसका साइज़ भी छोटा होते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट बाई zooming in and zooming in and zooming in with a very powerful camera or telescope आप उस शिप को कभी गायब ही नहीं होने दोगे, राइट? ये बात आ जाती है कि होराइजन इज़ द वैनिशिंग पॉइंट। एक पॉइंट के बाद होराइजन में उसका उस शिप का साइज़ इतना छोटा हो जाएगा कि इट इज़ नॉट डिसर्नेबल। आप कितना भी पावरफुल डिवाइस यूज़ कर लो, एक पॉइंट के बाद आप नहीं देख पाओगे। बट इट इन नो वे प्रूव्स कि इट वेंट ओवर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, बिकॉज कर्वेचर ऑफ द अर्थ हम क्या कर रहे हैं, जियोमेट्रिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ विच दे क्लेम। सो दैट्स द ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट जिसके बारे में इसी वीडियो में बात हो रही है। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। सो अराउंड दिस 6 मिनट मार्क नेथन ओकली बोलता है कुछ और बीच बीच में आई हैव सम मार्कर्स, तो उस पॉइंट पे आके मैं फिर से बोलूँगा। बट आई थिंक कि अभी थोड़े देर तो सुनते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 minutes. That with 10th man next week. Also got someone else, Professor Phil Bell. I'm hoping you just heard the terms of joining the stream. No ad homs, no logical fallacies, and no over talking. Professor Phil Bell, what can I do for you today? Well, first of all, can you hear me? I can hear you, Professor Phil Bell. Wonderful. Okay, so Mitchell, I'm interested in the image that you had up before with the ship, you know, the one that you used to describe. Damn, I just realized कि इतने देर में ब्लैक स्वान के बारे में बात कर रहा था, बट द पिक्चर वॉज नॉट ऑन। एनीवेज, मैंने जो बात करी वो तो आपने सुनी ली। पिक्चर में बस ये वाला दिखा रहा था, एंड मोडस टोलेंस आर्ग्यूमेंट ये वाला। सो जो भी मैंने अभी बात करी, व्हेन यू रीड दीज पार्ट्स यू विल गेट इट। तो आप रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो। सॉरी, आई विल ट्राई टू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। लेट्स गो बैक। The This one? Which one would you like? The one Yeah, that one. that has the zeniths, or the one that has the dip angle correction, the one that has actually shooting the angle with the sextant? Which one would you like? Well, they're all relevant. So one, we just start with the first one. Absolutely. Okay, the 90 degrees for the celestial bodies. Yeah, okay. Okay. All right, so while you've got that up, Mitchell, you said something about the sun earlier on. And let's say, would you agree that this image is trying to portray that ball up there as the sun or a star or something like that? Yep, that's what the image is for. The sun that we're shooting the angle of the sextant for. Awesome. And do you know how far the sun is? No, we have no idea. It's only an apparent size, an apparent angle, an apparent location. Do you know how far the sun is? Well, यही वाला पार्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या गड़बड़ है व्हेन फ्लैट अर्थर्स आल्सो क्लेम सम डिस्टेंस टू द अर्थ, some distance to the sun through whatever method, because then you're claiming the sun to be a physical object in the sky. You're claiming to know how big it is, what it is made of, ये सारी चीज़ें। Let's just be honest here, no one knows it. नेथन ओकली क्लियरली यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन मैंने बहुत बारी कोशिश की है अपने इंडिया के फ्लैट अर्थर्स को यही चीज़ समझाने की, बट द लॉजिक एस्केप्स देम, कांट हेल्प इट। I'm just trying to find out from you if you know. You said you don't know how the far the sun is. Oh, no one knows how far the sun is, but you definitely claim that we have a distance to the sun. Do you know how that's derived? But you do too. I know how it's derived, absolutely. I know how the distance to the sun is derived. You actually do have a claim on that you know the distance to the sun. Oh, do I, Professor Phil Bell? How far is the distance to the sun? Well, shall we work it out? What do you mean? You said it's my claim. What have I said the distance to the sun is? Let me share. Would you like? May I share something with you? If you would like to share your screen, go ahead. As long as it's not rude.
Mitchell's too sharp. Yeah, he's not going to let Phil present some straw-maned claim that he hasn't made about the distance to the sun. But Phil needs that argument to be had, so he can say... समझ रहे हो फ्लैट अर्थर्स, यू ऑल्सो नीड टू बी शार्प. जब एक ग्लोब अर्थर से आप का पॉइंट है कि यू कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस टू द सन, फिर आप खुद वो सेम गलती तो मत कमिट करो, दैट यू आर ऑल्सो क्लेमिंग अनदर डिस्टेंस टू द सन, जस्ट दैट दिस टाइम इट इज़ मच स्मॉलर एंड मच क्लोजर. इट इज़ नॉट आवर क्लेम. हमारा क्लेम है कि जो भी यहाँ पे हम सन का हाइट मेजर कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल हाइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स. हाइट मीन्स ऑल्टीट्यूड, which is elevation angle. Using a sextant, सन का हाइट मतलब उसका एलिवेशन एंगल. उस पॉइंट पे भी हम आएंगे अभी, बट कीप दैट इन माइंड that the flat earther is not claiming any distance to the sun. Still, the globe earther, because he has a preconceived script, he is going to stick to. इसीलिए even if the flat earther says कि no, I am not claiming any distance, the globe earther still sticks to his script and stereotypes the flat earther. कि अरे तुम नहीं बोलते हो तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई लोग बोलते हैं 3000 किलोमीटर दूर है, ऐसे कैलकुलेट किया उन्होंने. How your distance to the sun that you're not claiming doesn't work. But it was explicitly made clear to him twice by Mitch. No, I'm not claiming any distance. Nobody knows. That's what he said. No, you are claiming a distance. Do you want me to show you how you calculate it? You having me on? Do you want me to be shown by you how I claim something I've explicitly said I don't claim? Oh, yeah, be my guest. You stupid dick. As long as it's not inappropriate, it's on topic. But you have made a claim that I have said that there is a distance to the sun. Or is that just telling porkies? Let me show you how. Let me show you how you actually make that claim, okay? No, you're going to back up your claim that I made the claim there's a distance to the sun. Let me show you. No, where did I say? Let me show you the straw man bullshit lie of a claim you haven't made that I need to hold up in false dichotomy. Let me show you that. Right, Phil? You stupid dick. How transparent? Do you think Mitchell was born yesterday? That there is a distance to the sun, Professor Phil. You don't say it implicitly, but you imply Okay, it. So when someone doesn't say something explicitly, you think that means that they're explicitly making a claim about a distance to the sun, do you, Phil? No, if I don't say something explicitly, I'm not saying it explicitly. Therefore, you're not going to tell me that I explicitly make a claim about it. And the same applies to Mitch. Yeah, he doesn't make a claim. He made it explicitly clear that he doesn't. Now you're saying, well, you don't, you just infer it. Oh, does he? Oh, so you're going to debunk his inference that you've taken. You took that inference, Phil, you stupid clown. So I haven't actually said it. So No, you No, he hasn't, has he, Phil? But you've just made 4 attempts to strawman him with something, haven't you, that you've told him he must listen to? You stupid clown. retract it. I imply it. So I said that you imply that you know the distance. So you're going to debunk his implications. Is that right? Is that how it works, is it? Well, the implications of what you say are as follows. That's fascinating. I couldn't give a crap. What do I actually claim? Do I claim a distance to the sun? No. Yeah, we've cleared that up. Now let's move on. So, okay, so that's a straw man. That's a logical fallacy. So don't say that I imply a distance to the sun. I have specifically said there is no distance to the sun. It is only apparent distance, All right. apparent location. okay, That let's is my claim. let's just follow this through, and then we can. Well, let's just do the straw man bullshit that he doesn't claim anyway, Phil. Is that how it works? Let's do it anyway. No. How about no? How about you explain how you need a flat Earth 90-degree angle to this sun, as was presented and claimed prior to you making any objections? I'm pretty sure that that's what he actually presented. Do you not have the capability of listening to what he presented and then addressing that, Phil? Yeah, clearly you need your straw man. And talk about that. So we're going to go through heights of the sun using triangulation. Is that where you're going to go with this, Professor Phil Bell? Well, just a minute, and I'll try to get this up. Okay. Okay, you've got a little screen share button at the bottom of the screen. If you want audio, you have to click audio.
There's, Yeah, no, there's that's windows. Okay. So are we saying, well, Professor Phil Bell has left the stream. If you're still there, Phil, I can't get you back in the stream. You've taken yourself out of the stream somehow. Now, this is going to be very interesting from someone who calls himself a professor. Let's see where this goes. He's taking himself out of the stream. Can someone just type in the chat, you've removed yourself from the stream? Because I can't get him back into the stream. There he is. All right. Sorry, I mucked it up somehow. All right, got you back. All right, okay. So If let's you just. can So are you claiming that this sun is tangible in this situation? That is a physical object with Well, okay. Let's. I'm not claiming anything. Yeah, you absolutely are, Phil. Yeah, you are. You're a baller. Therefore, there's already a set in stone claim on your behalf that you adhere to by being a baller. Like the certain fundamental principles of being a Christian, like believing in Christ. You believe in a ball. You're automatically making a claim, my friend. The claim that he's made, you've ignored and told him that he needs to listen to your straw man that he needed to build up. That's what you've done. Now you're telling him you've got no claim. You're a baller, dickhead. So it's important to point out here another thing. वही रिप्लेसमेंट वाली बात ही आ जाती है कि सिंस यू नो लॉन्गर हैव द ग्लोब अर्थ, तो फ्लैट अर्थर्स क्या क्लेम करने लगते हैं या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं क्लेम करना तो पता नहीं. अकॉर्डिंग टू फ्लैट अर्थ थियरी, फ्लैट अर्थ को उन्होंने एक थियरी बना दिया है या मॉडल बना दिया है, जो ग्लोब अर्थर्स आके स्ट्रॉमैन करते हैं कि वेयर इज़ योर फ्लैट अर्थ मॉडल. तो ये स्ट्रॉमैन तब तक है जब तक कोई फ्लैट अर्थर एक्चुअली क्लेम नहीं कर रहा है कि वी हैव अ मॉडल. बट अगर फ्लैट अर्थर्स खुद से क्लेम कर रहे हैं कि येस देयर इज़ अ फ्लैट अर्थ मॉडल बट वी जस्ट डोंट हैव इट नाउ, फिर तो बात वही हो गई ना. दो मॉडल्स में से आपको एक मॉडल चूज़ करना है विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. So again, don't claim it then ना. There is no flat earth model. जो भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर डोम बना के सन एंड मून को रोटेट करते हुए दिखाते हैं, they are not models first of all. And if you are claiming that it's a model, then tell me what's the size of the sun, what's the height of the sun above the earth. ये सब चीज़ें आपने कैसे पता करी. वही सेम क्वेश्चन जो हम ग्लोवर से पूछते हैं वही एक फ्लैट अर्थर से भी पूछा जाएगा अगर वो ऐसा कोई क्लेम लेके आते हैं कि मुझे पता है सन इतना बड़ा है और इतनी दूर है और क्या है. बट आई डोंट थिंक एनी वन डज. नो वन नोज. सी कितने बोल्डली बोला उसने. नो वन नोज द डिस्टेंस टू द सन. अगर कोई क्लेम कर रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कोई ना कोई अजम्पशन उसके क्लेम में ऑलरेडी है. वो अजम्पशन आपको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, बी इट अ ग्लोब अर्थर और अ फ्लैट अर्थर. Well, if you debunk the apparent position of something, have you actually done anything? No. The not actual No. position's been debunked. Well, it wasn't the actual position. Yeah, but I've debunked it. Well, the not actual position, the apparent position's been debunked. How interesting, you stupid clown. Do not use Microsoft Excel. Good point, John. Just going to have a discussion with you about what you have on the screen. Okay, is that okay? I'm not going to make any claims at all. So if we've got distances to something, it must be tangible. Have you got evidence to that? Well, let's just see. Let's just discuss what you have. Okay. So I'm just trying to share something, and I was just having a little bit of trouble with that. Okay, I'm just telling the audience what you're trying to set up here. You're very, very close to begging the question that we have a tangible sun, a physical object that we can attain a distance to. Very, very close to begging the question, Phil Bell. I'll wait for your little diagrams. Sure. That's not my diagram. It's yours, actually. Okay, cool. Has it got
a distance to the sun in the diagram? Hang on a second. I'm trying to organize. I haven't used this before, so that's why I'm a distance to a tangible thing, something that we can go and poke, something we can go and arrive at, something we can put a flag on, something we can get close to, something that doesn't just move away from us as we move to it, like a rainbow, just an apparent thing. Just trying to fill just trying to fill the dead air here, Phil Bell. We're all in suspense. Maybe I'll just try sharing the screen. I thought that's what you were doing, sharing screen. As riveting as this is, we all know where this is going to go. It is going to be claimed that we have a distance to a sun above what? A flat surface? Are you claiming that we do have a flat surface beneath our feet, Phil Bell, in this situation? Hang on a second. I've been hanging on a lot of seconds, and you're absolutely ruining my mojo for the live stream here. I'm sorry. I apologise for that. Okay. Well, would you like to come back in when you're actually ready, or are you ready to go? All right. I'll just keep. Just a minute. Okay. I'll just keep. Okay. You can keep talking while I'm doing this. Okay. I'll put you on mute at the moment, Phil Bell, because you're absolutely not adding anything to the stream. So, I was just talking about how we are controlling the narrative. We are controlling what is being talked about here. Measuring a horizontal plane with the use of an artificial horizon. That is the claim on the table at the moment. Did you want to add something, Tenth? You got your mic open and I just went to grab a coffee and left it playing. Yeah, I do. Go to Master B for a minute. I got 4 slides to back up with our dear friend Mitch. So, 10th man, just to give you the heads up, ये celestial navigation वाला जो point है, इस पे लगभग से पिछले 1.5 से 2 साल से नेथन के चैनल पे बात हो रही है. I have been an active part of all such discussions. But 10th man is the one who owns a boat, I think. Whether he owns it or... I just know कि he's there on the boat once in a while. And वो यूज़ भी करता है ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. Celestial navigation के बारे में. So इसीलिए 10th man ने Celestial navigation के जो almanacs होते हैं, जो मैनुअल्स होते हैं, इंटरनेट पे सेलेस्टियल नेविगेशन के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं, ये सब कुछ पिछले 1.5-2 साल में वो बीच बीच में छान मारता है और वहाँ से कुछ कंटेंट मिलता है, वो लेके आता है यहाँ पे नेथन के शो में और वो बात करते हैं. तो इसीलिए 10th मैन को एक नेथन ने स्पेशल अलग से बोला कि तुम्हारे पास अगर कोई पॉइंट्स हैं अभी तक बोलने के लिए तो वो बोल सकते हो. जो पॉइंट्स अभी 10th मैन लेके आता है, बेसिकली मैंने वो शुरू में ही कवर कर लिया था कि हाइट की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट हाइट एज इन द डिस्टेंस, इट इज़ हाइट एज इन द एंगल. हाइट above the horizontal measured in terms of angle. Mitchell is saying here. Okay, I'm on the first one. Yeah, altitude or elevation. These are synonyms for the angular height of an object above your horizon at any given moment. When the star is on your horizon, so that it is either just rising or just setting, its altitude or elevation is 0 degrees. And when it's directly overhead at the zenith, its altitude or elevation is 90 degrees. Keep in mind that this is an angle, not a physical distance. And it shows. इससे ज़्यादा और क्या क्लियर बोलने की ज़रूरत है? Altitude or elevation, these are synonyms for the angular height of an object above your horizon at any given moment. लास्ट में फिर से क्या पढ़ा हमने? Keep in mind that this is an angle, not a physical distance. Altitude और elevation कैसे मेजर किया? Angles above your horizon. You know what?
you're gonna need a flat plane for that. All roads lead to flat Earth. There's a diagram below. Next slide. The sextant is one of the most important instruments used by navigators. It's fundamentally a kind of telescope for measuring the angular height of a celestial body, such as the sun, a planet, or star, above the horizon. This height is not measured in feet or miles or inches, but in terms of angular degrees. Next slide. For purpose of obtaining this distance accurately, the sextant was invented. This instrument measures the height, altitude of celestial bodies above the horizon. Our overhead point is 90 degrees above the horizon. Therefore, the distance between a star and our overhead point would be 90 minus the star's altitude. Of course, we are really measuring a distance in the sky, really measuring a distance in the sky, but an angle. So we're back to angle, not the actual distance. And the last one from Smithsonian. A sextant is used to measure an altitude of a celestial body above the horizontal line of reference. Pretty clear. Altitude in this case is a special use of the word describing an angular measure, not a distance in feet above sea level. I'm done. Perfect. Moment. I don't think there's much to add. 10th man just drilled it again and again and again. Altitude is angle, measured in angles, not in feet, not a physical distance. बार बार रिपीट करके उसने बोल दिया. आगे सुनते हैं. From people like Mr. Sensible, we don't need the horizon. All we need is something like a bubble sextant, something that makes its own level horizontal plane, something that doesn't need a dip angle correction. Because if we do not need to correct for dip angle, we are already shooting an angle now from where are we? the We're on sextant third, right? to the celestial body, Where do you gotta go? and he's going to be making a horizontal You gotta plane. turn up Its there? own horizontal Okay, plane. so Type it Neil, on, gives him your mic. $5 to say, Sorry. I found this in the couch. Give it to Professor Phil to buy a glasses to find what he's looking for. Yes, we'll check back in with Professor Phil Bell. Professor Phil Bell, we're still not seeing a screen share from you. Oh, there we go. Now we've got it. All right, I'll add it to the stream. All right, you ready to go? It's up on stream. Sure. Can you still Let's hear see. me? I can still hear you. Phil. Okay, so let's. This is the photo that the image that you've been discussing. Okay. Isn't it? So the No, it isn't. So what's now been presented on screen is not the image that was presented. It's been added to by Phil. So line number 1. No, that's not the image, because if it was the image, you'd be discussing the point that was raised alongside the image. You've now made alterations to the image and now want to argue about the alterations, no doubt. What a bloody outrage. A liar. That's not the image, is it, Phil? You've added to it, mate. Yeah? Do you not understand that stating it's the same image would mean that you'd address the points that he raised alongside it, and you're not going to? first thing I can see glaringly, parallel rays, that's not what I'm claiming here. This is what globe believers like Mr. Sensible have said, that we have a zenith, and from that zenith we can derive a distance to the GP. So that one on the parallel line on the right, that's not a parallel ray, that's a parallel line. Okay. So call it what where you are we like. going with this? Okay, so call it what you like. Okay, it's the fact is it's parallel, isn't it? It's The parallel one with you pick, right? yeah. So we've got two 90-degree angles only possible on a flat surface. Someone was explaining to me the other day that their parallel light negates them acquiring a triangle at all. Now, I've forgotten how it was explained to me, but I can't remember who it was that gave me that information. I'll have to chase them up on that. There's some discrepancy with parallel light not working full stop with triangulation. I can't remember how, though. Can anybody on the panel remember? I can tell you that the lines will never meet if they're both 90, so you'll never be able to triangulate the position.
However, to measure two 90-degree angles, he's assuming there's flat. Bill Bell is. Yeah, it's just a cluster screw. It's stupid. I mean, it's obvious that if the star's zenith is 90 degrees over the Earth, and that's GP of the star, and it's, say, 3,000 miles away from the observer's GP, who's also got a zenith at his 90, that's two 90s. How do you do that on a curved surface? Most services businesses fail because the only person who can surface to 90 degrees must be parallel, right? Correct. Okay, terrific. Okay, so the other thing that you said, probably on the last stream that you did, that and you agreed that every degree of latitude is 69 miles. Oh no, that was something else setting up people like Sean Hawkins for. We absolutely do not see 60 nautical miles every 1 degree. Have you seen the video by Sleeping Warrior of the stars I when don't they get closer to the... I don't listen to idiots, okay? So we're not idiots. We're Aussies. Ad hom number one. Please don't ad hom. We're not... No, I'm not ad homing you. No, it is an ad hom, and I don't appreciate it in the stream because I'm making the example of someone... All right. When we view stars closer than 15 degrees to the horizon, we absolutely do not see, for every 1 degree, 60 nautical miles. That's not what we can arrive with under 15 degrees to the horizon. So that is definitely not a claim that I've made because I know the observations in here in reality. We cannot use observations closer than 15 degrees to the horizon for 60 nautical. Not strictly true. It's avoided, but it's not impossible to use stars that are close to the horizon below 15 degrees. That's not strictly accurate. But you don't get 1 degree equals 69. Oh no, I'll take that back. You're right. No, I immediately take that back. I missed the point, and I'll take it back immediately. His point was, no, we don't get 1 degree we don't get 60 nautical miles for every 1 degree below 15 degrees. That's correct. Take it all back. My bad. Mitch, you're ahead of me, so good on you. You don't think the staple of 69 statute miles per degree of latitude is a thing? That just covered that. I missed it. So did Phil. That's been used for hundreds of years. That just doesn't exist. Is that your claim? The claim is when the stars get closer than 15 degrees to the horizon, they do not move 1 degree every 69 miles on the surface of the Earth. I'm talking about above that. Let's say above 15. The reason it's 15 degrees was So, no then. So let's say with this caveat. Oh, right. The one that he gave you, the one that Mitch gave you. I see. Seems he knows this better than you do. Because of refraction. But let's go above that. Let's say 45 degrees. So if it can't be used once, why can we use it anywhere else? Why does it hold true? You can't use it at 15. You could, but it'll be inaccurate because of refraction. So we can't use it. Yeah, that's real refraction. That's actual refraction. Yeah, like something relative to the horizon. Mitchell, just hang on a second. Hang on. Don't be challenging me on the things I've said. Let me get all the bullshit out all at once. What's this challenging me with the things I've said after I've said them? Just calm down, please, Mitch. You know, before this little interlude between the two of them, right? This back and forth, Mitch had said that he's in complete control of this. We flat earthers are in control of the way the conversation's going. Never a truer word was spoken, Mitch. The best preempting to this conversation you could have had. So, Mitchell, it's you asked me a question. You said, why can't you use it at below 15 degrees? No. You asked him a question. Would you agree that it is 1 degree or 69 miles for every 1 degree? And he said no, and then showed you how it wasn't. Then you said, well, obviously not conceding your caveat that you told me that makes my question wrong, and a good reason for not conceding that would be the case. You haven't said any of that. You just moved on like indignant Phil has somehow got an issue with a problem with his own example. Maybe. So,
कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है क्या यहाँ पे? 69 माइल्स पर डिग्री क्या बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? व्हेन वी गो अलॉन्ग विद दिस वीडियो तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा आगे जाके, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक कि मैं थोड़ा सा अपने तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ कि वो जो 69 माइल्स पर डिग्री की बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन यहीं पे, यस मेरा माउस मूव कर रहा है, तो पर डिग्री ये जो हमने जेनिथ से लेके होराइज़न 90 डिग्री ड्रॉ किया है, उसमें सन का, स्टार का, मून का, जिसका भी आप एलिवेशन एंगल मेजर कर रहे हो वो थीटा निकलेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल जाता है, जस्ट उसका ऑपोजिट वाला, ये वाला एंगल। एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें हम अपने पिछले वीडियो में भी, पिछले लाइव स्ट्रीम में भी, चाणक्य वाले में बात कर रहे थे। एंड जैसे जैसे ये थीटा जो है वो मान लो होराइज़न से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके 45 डिग्रीज तक आया, फिर 60 डिग्री, फिर कहीं जाके एकदम जो जेनिथ पॉइंट होगा स्ट्रेट ओवरहेड वो 90 डिग्री होगा। तो हॉरिजॉन्टल और जेनिथ के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो अब कोई स्टार होराइज़न से उठ के जब तक आपके 90 डिग्री में आया, उस पॉइंट तक उसने पूरे 90 डिग्रीज कवर किए। नाउ दिस कैलकुलेशन इज एक्स्ट्रापोलेटेड टू गेट आवर लैटिट्यूड्स। पिछले वाले लाइव स्ट्रीम के एंड में मैं एग्जैक्टली यही बात बोलता हूँ कि ये पॉइंट समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑल रोड्स लीड टू फ्लैट अर्थ, ये बस ऐਵੇਂ ही बोलने की बात नहीं है। आप जब पता करते हो कि ये लैटिट्यूड्स, जो जिसका हवाला हमें ग्लोब अर्थर्स की तरफ से मिलता है कि लैटिट्यूड्स कैसे काम करेंगे फ्लैट अर्थ पे, ये लैटिट्यूड्स कैसे आए हैं, ये लैटिट्यूड्स बेसिकली पोलैरिस को एंगल से जब आप मेजर करोगे, तो जब आप एकदम पोलैरिस के पास हो, नॉर्थ पोल के, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास कहीं, तो पोलैरिस आपके स्ट्रेट ओवरहेड होगा, और द फारदेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक पोलैरिस दिखता है हमें, दैट इज़ द इक्वेटर। इक्वेटर पे जाके पोलैरिस आपके होराइज़न पे आ जाता है, 90 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि पोल से लेके ग्लोब का, एक स्फीयर का अगर आप सोचो, तो नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर वाला जो 90 डिग्री बन रहा है, विच इज़ एक्चुअली दिस मेजरमेंट बेस्ड ऑन अ फ्लैट अर्थ, लेकिन वो आपको बताया क्या जा रहा है कि वो 90 डिग्री स्फीयर के सेंटर पे जाके कहीं ना कहीं बन रहा है, एंड दैट 90 डिग्री यू आर रेफरिंग टू। सो बेसिकली जो लैटिट्यूड्स के कैलकुलेशंस आए हैं वो है कि पर डिग्री हम एक एक लैटिट्यूड नीचे आते रहते हैं। तो लैटिट्यूड्स के जो कैलकुलेशंस आए हैं वो पोलैरिस को बेस रखते हुए आप नॉर्थ पोल से दूर चलते चलो और अपने अराउंड एक सर्कल बनाते चलो एट एवरी डिग्री। जिस पॉइंट से मान लो आपको थ्रू आउट पोलैरिस 45 डिग्रीज पे दिख रहा है ऑन अर्थ, इट विल बी अ सर्कल अराउंड द अर्थ। उस सर्कल से उस सर्कल पे सारे पॉइंट से पोलैरिस 45 डिग्री पे ही दिखेगा। दैट्स योर 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, बट एक स्टेटमेंट जो मैंने बीच में बोला उसको कोई क्वेश्चन कर सकता है या कन्फ्यूजन हो सकता है कि इक्वेटर के दूसरे पार क्या पोलैरिस नहीं दिखता है। दिखता है स्टिल, उसका मतलब स्लाइटली थोड़े दूर तक कहीं कहीं बोलते हैं कि दिखता है, बट अगेन इट कैन बी एट्रीब्यूटेड। यही बात अभी चल रही थी कि होराइज़न के पास जाके हमें एक्चुअल रिफ्रैक्शन के वजह से बहुत सारे एनॉमलीज दिखते रहते हैं, इसीलिए यू कैन नॉट रियली से बियॉन्ड 15 डिग्रीज, 0 से लेके 15 डिग्रीज, मतलब व्हेन अ स्टार इज़ रियली क्लोज टू द होराइज़न, then its movement does not actually correspond to the distance, which is 69 miles per degree.
उसी की अभी बात हो रही है. You can see that you should have put the caveat in that he gave you. It's because you're arrogant, Phil. You can't tolerate the fact that Mitch has corrected you on your incorrect assertion that you asked him agree to, and he wouldn't for very reasonable reasons which he gave you. It's not wise to use it below 15 degrees if you're out at sea, because you could be wrong quite a bit. So in answer to your own question, no. Now, if you want to pick an object that's... If you want to think about this before you actually make the statement and ask him questions to agree with that you couldn't agree with for the reasons he gave, you might not end up stuttering your way around the example that you were supposed to give, but he gave you the caveats that make the example wrong. Then you wouldn't be stuttering, Phil. Much higher, like 45 degrees or something like that, then that refraction isn't going to be a problem. So let's go with the 45 degrees. Is that okay? Why is that, by the way? Why is it that in celestial navigation we know that they would say that no, you don't have to worry about the slowing down of the star towards the horizon below 15 degrees. If you're above 15 degrees, okay, yeah, we can agree to that. It's part of the process of measuring a flat Earth and navigating a flat Earth with celestial navigation. Yeah, we can all agree to that. However, that is not the process of doing ball mechanics or navigating a ball. But in your ball, that we aren't navigating in this instance, you've got always in effect sphere-shaped air. So you're saying that at 45 degrees it stops being sphere-shaped air? It just seems to me that your sphere-shaped air that's always in effect, always refracting everything always, somehow doesn't comport with us not having refraction at 45 degrees? It's just because we're not doing this on a ball. If we were, we'd damn well be accounting for the fact that you say we've always got sphere-shaped air, always in effect refraction. Therefore, we're not going to be drawing straight lines at 45 degrees if we're considering that we've got atmosphere, sphere-shaped air oxymoron, Phil. But that's not what we're doing, are we? We're not dealing with a sphere. We're dealing with a flat Earth. So 45 degrees straight line, no worries. No sphere-shaped air needs to be accounted for. Because we're... तो ये एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट तो समझ ही रहे होगे, लेकिन ऑर्बिटल मैकेनिक्स के बारे में 1 सेकेंड अनम्यूट ऑर्बिटल मैकेनिक्स के बारे में जो वो बोल रहा है, ऑर्बिटल मैकेनिक्स वही सेम जो चीज़ यूज़ करके वो चंद्रयान भेज रहे हैं और सैटेलाइट्स ऑर्बिटल मैकेनिक्स के कैलकुलेशन पे काम करता है. वो ऑर्बिटल मैकेनिक्स करने के लिए गेस व्हाट, यू आर गोइंग टू नीड अ फ्लैट प्लेन फॉर दैट. You're going to need a flat earth for that. All roads lead to flat earth. Orbital mechanics के जो calculations हैं, they are again based on measurements of elevation angles of celestial bodies. उसके बाद फिर उसको वो re-engineer करते हैं केपलर्स लॉ और कोपरनिकन हीलियोसेंट्रिज्म में डाल के, using Kepler's third law of orbital mechanics. So, just to give you the heads up, to contextualize things. We're not on a bloody sphere. If we were, like you claim we are, even though you're saying we've got no claims, then you'd have sphere-shaped air to account for, Phil, at any degree. It's always sphere-shaped, according to you Muppets, so you better damn well account for it, at 45 degrees or any other degrees. Because if you've got ball-shaped air to account for, you've got ball-shaped air to account for. So damn well account for it. Just don't tell us how it's not in effect when we're measuring a flat Earth. Because who cares? From your ball position, it means nothing. It just means Earth's flat. Let's go with it. Where's this going to go? Okay. Well, you can see from the diagram, I reckon that anybody just looking at this diagram would know exactly where we're going with this. So, I don't know where you're going. You haven't gone there. You've stuttered and stammered around an incorrect question that you asked him to affirm when he didn't. And then you started stuttering. What I see on this diagram is 90 degrees below the GP position of the Sun. Therefore, this is a flat Earth diagram. The triangle that's being drawn and is practically used for navigation requires Earth to be flat, as drawn in this diagram. So no, Phil, I've got no idea where you're going with this flat Earth diagram that needs Earth to be flat and wouldn't give you 90 if it wasn't. Further to that, the 90 has got an angle coming off it from the boat. Yeah? That other line that isn't the baseline would be going through sphere-shaped air if we're on a bloody sphere. So how are you getting a straight line to anything ever? You wouldn't. So I don't know how this is anyway going to affirm a sphere. It isn't. It needs a flat Earth. That's what this is showing, Phil, so I've no idea where you're going. So,
If we got 69 miles per degree of latitude, which is a staple of navigation and has been for hundreds of years, therefore, the distance, you can therefore know the distance from the ship, if you've got it there, to the GP. You can know that, right? Yeah, on a flat plane. Nothing to do with the height of the sun. Nothing to do with parallel light rays. Nothing to do with sphere-shaped air. Nothing to do with curved baselines. And everything to do with a triangle being drawn between you and the base of the sun, in this instance on the ground, with 90 degrees to your position, which means Earth's flat. Yeah, we can all see that, Phil. That's why it was used. I don't know why you added the parallel light rays and started questioning about the height of the sun when you're not. Trying to find out the height of the sun. That's not what you do in celestial navigation. You're trying to find out where you are, with the positions on the ground below where stars are. That's called their GP positions along a flat plane. So we know what it's for. Eventually you'll probably get to... Yes, I forgot to unmute. I pulled a QE. तो I was saying, दो चीज़ें. पहली कि अगर किसी को ज्वाइन करना है रिलेटेड पॉइंट्स पे बात करने के लिए तो द लिंक इज़ इन द पिन्ड कमेंट. और यस, आई वाज ऑन म्यूट. पुल द क्यूई. एंड दूसरा पॉइंट भूल गया मैं. लेट्स जस्ट कंटिन्यू. You straw man with parallel light rays or a height to the sun he hasn't claimed. And you've said that on your last stream. You said, well, that would be thousands of miles. So therefore, you know. From the nautical almanac. So we look up, we've got an angle with the angle measuring device, and we look it up for the GP of the celestial body in the nautical almanac. So it's already got it written down for us. So we've got distance to the GP. So you can know that distance, right? And absolutely, we know that it is a flat surface measuring to the GP. No, we're counting on the fact. Yeah, I could just pause, Phil, in between his breaths, and then point out that Earth's flat. When Mitch does it, he gets interrupted by Phil, you notice. Yeah, the summary that I just gave was about to be given by Mitch, but he got interrupted. We've heard enough of you stammering and stuttering about this flat plane picture with 90 degrees below the sun, Phil. The conclusion was about to come from your host. But you seem to feel the need to interrupt that conclusion, that Earth's flat. I wonder why. Fact that it's a flat surface, that's what you in this particular instance. So I'm going with that it is a flat surface measuring to the GP. We're counting on the fact that it's a flat surface. That's what we're counting on, the fact that it is a flat surface. Hear that again? You can know that distance, right? And absolutely, we know that it is a flat surface measuring to the GP. We're counting on the fact that it's a flat surface. That's what we're dealing with. We are counting on the fact that it's a flat surface. Here's your Glovers. Epic. Measuring is. Yeah. Counting on. Yeah. Good job. In this particular instance. So I'm going with agreeing with a flat Earth. You're going to agree with him that Earth's flat then. So Phil, welcome to Flat Earth. If you agree with him, then Earth's being measured flat. So is that your... This has been the history of celestial navigation for Flat Earth. जितने भी लोग डिबंक करने को आए हैं यहाँ पे सेलेस्टियल नेविगेशन और एलिवेशन एंगल वाले पॉइंट को, वो अल्टीमेटली मान के गए हैं कि यस, दिस इज़ राइट, दिस इज़ हाउ इट इज़ डन.
Welcome to Flat Earth. Let's take your stance. No, it's not. Of course not. The Earth is a sphere, but never mind. Sorry, you've just conceded that that's how it's done. You're relying on it being flat. What, the ground position, your position on the ground, your distance measurement along the flat surface, the triangle, the angle, the 90? Yeah, it all requires Earth to be flat, and according to you, you're counting on it being flat. But what, Earth's a sphere? Now, that's just the statement of a complete clown. You know, after showing us and demonstrating how Earth's going to be measured flat, to declare that it's spherical is absurd, Phil. It's also a baseless assertion. It's a fallacy that he should kick you out for. So ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था एट 33 मिनट मार्क जो नेथन ने अभी बोला. यहाँ तक मुझे पहुँचना ही था एंड नियर अबाउट 50-55 मिनट्स तक हमें जाना है. 20 more minutes. Yes, that would make my video near about 2 hour long. Sticking to the norm. तो ये वाला पार्ट फिर से थोड़ा सा और सुन लेते हैं. So, Phil, welcome to Flat Earth. If you agree with him, then Earth's being measured flat. Is that your... Let's take your stance. No, it's not. Of course not. The Earth is a sphere, but never mind. Sorry, you've just conceded that that's how it's done. You're relying on it being flat. What, the ground position, your position on the ground, your distance measurement along the flat surface, the triangle, the angle, the 90? Yeah, it all requires Earth to be flat, and according to you, you're counting on it being flat. But what, Earth's a sphere? Now, that's just the statement of a complete clown. You know, after showing us and demonstrating how Earth's going to be measured flat, to declare that it's spherical is absurd, Phil. It's also a baseless assertion. It's a fallacy that he should kick you out for. Go on. Yeah, Nathan, did I just hear Phil Bell say that the sextant basically necessitates a flat surface since it measures angles, but he knows he lives on a sphere? Yes. He knows it needs to be flat. He's relying on it being flat. Earth is needed to be flat to do this, and it can only be flat to get the measurements. He's relying on that fact. But Earth is a ball, according to Phil. Yes. That's the only reason why you are not able to speak in English fluently, because kabhi bhi agar aap Sean Hawkins is in the chat. Yes, Arvin, I had a look. Sean Hawkins is with us. He can join the discussion if he wants. Earth is a sphere. Okay, we've got to claim that the Earth is... By the way, I'm all alone. I'm all by me onesies here today. So, still, anyone who wants to join can come and join and present their arguments. We just welcomed Professor Phil Bell to Flat Earth. He just admitted that the Earth is flat. We are counting on it to be flat. You're going to beg the question. You're begging the question. I'm taking begging. It's not begging the question fallacy, right? It hasn't begged the question, made a statement, and then the statement assumed the outcome in the first instance. It's a baseless assertion. It's got nothing other than flat Earth proof behind it. So how's he begging the question? You can't beg the question that Earth's going to be spherical, and then you look at a geo. Exactly. So he just admitted that you are going to need a flat Earth for that, and after that went on with his baseless assertion that it is a sphere. To put it simply. Geometric horizon you assume is Earth curve. That's begging the question. This is using a flat Earth and then making a baseless assertion that Earth's spherical at the end. That's not begging the question. That's a baseless assertion fallacy. Because what's he based the spherical bit on?
Nothing. There's nothing spherical in this at all. So it's purely a baseless assertion, not a begging the question fallacy in this instance. Begging the question, Phil Bell. You can't just come on here and say the Earth is a sphere and just mindlessly parrot things that everything's. Oops. To calculate the distance to it. But the problem is... If we've got an angle to something like a rainbow, can we calculate the distance to the rainbow? I'm using your diagram. This is your diagram. No, it isn't his diagram, Phil. It's the diagram you amended. Yeah? Do you need to continuously lie about it being his diagram? Did he put these lines on, these parallel lines that you need to make your straw man argument about distance to the sun? And light being assumed to be parallel. That is a begging the question fallacy. Yeah. It's not his diagram, Phil. Stop lying. Is that what you need to do? Tell him that the amended diagram you produced is his. No, it isn't. Don't lie, you scumbag liar. Okay, so... The claim is from me that the sun is apparent. Just like a rainbow, can we measure a distance to something like a rainbow that is only apparent? There are actual drops, where the sun's shining through for a rainbow. Can we measure a distance to a rainbow? Well, why not? No different to the sun. The distance to the sun and the distance to a rainbow can be both the same thing. As Arwin puts it now, 1 AU, 1 Arwinian unit. Let's get back to this picture, please. All right? Let's get back to the picture of the apparent thing. This was your subject, Phil. You claimed that he had a claim about the distance to the sun. He said he hadn't, made it explicitly clear, then pointed out that you as a baller do. But let's get back to the straw man that you wanted to bring up. He's addressing your actual claim you said you hadn't got about your distance to your sun in your amended diagram with your parallel light rays that aren't his, that you've lied about. That's where we're at. So, we have a Glober numpty here. Another one of them who doesn't know what science is. I'm not talking about Nathan's video. Professor Bill, of course, is that one, but right now I'm talking about Sean Hawkins, who is in the chat. And he's asking the question, when was the black swan ever put through the scientific method? According to him, that means according to Nathan Oakley, all evidence needs to be affirmed through science. You are patently wrong about it. If you don't understand that the black swan, Nathan did talk about this very same thing. What is science? We are going to come to that in this very video. You don't know what science is. What's the question here? Black swan, you are measuring the earth. Earth being flat is not a question that you can put through the scientific method because it is not a cause and effect relationship. You are not studying a phenomenon. And I think we are going to come to that part and call it a day in today's show. It comes after like 10 to 15 minutes in this video. I can skip that part and directly cut to the chase, but let's just endure. There are pearls of wisdom in between. In the sky that you're trying to measure a physical distance to? Well, so I know it's very difficult. Look at y, and we're saying we can actually work out what y is, and according to your picture, you should be. According to his picture, with y diagrammed as being a height we could acquire, nobody's acquiring a height in celestial navigation, and his argument was based on his diagram that didn't have the amendments. And you'd be addressing that, but for the fact that you've now decided that you're going to acquire the height of the sun. For what, Phil? What practical application do we have for acquiring it? There isn't one. There is no practical application for doing this. It's your straw man from your diagram that you need to represent him as measuring the height off a flat plane, I might add. Well, this process doesn't include measuring height, Phil. He's made twice explicitly clear that he's not claiming that. You can do it anyway, right, you scumbag, with your lies about this being his? Well, even if you
even if you give in to the idea that Phil is putting across, right, and debunk the actual height of the sun, big deal. Who has claimed the sun has an actual height? Phil has. That's where we're at. Phil has. This height that he's saying you could measure and should be measuring so you can claim it, even though you're saying you're not and you won't and you haven't, you don't need to, and it's not part of this process. Here's the height, it's wrong. That's what he's going to do. Okay. Well, this is your height, Phil. You're measuring it. You're getting Y. When did I get Y? When did I claim you needed to get Y? Show me where I exampled Y being measured. Show me this being me measuring it. It isn't. It's Phil doing it. So Phil can say his measurements he did that aren't needed are wrong. That's what he's doing. But then say they're Mitch's. Able to determine what Y is, because you know what X is and you know what the angle is. Do you agree with that? No, Phil, you're measuring Y when no one needs it. I agree that there is no apparent. There is only an apparent distance to the sun. There is no Do you agree Y. that your diagram suggests that you can work out what Y is? It suggests it, but he didn't claim it. So you're saying because the diagram suggests that you could get Y, you're going to try and get Y even though it's not part of the process of celestial navigation and doesn't help you find your position on the ground? No, I don't think it's part of the process of finding your position on the ground, therefore I wouldn't need to claim it for you to say it's wrong. But you're going to claim it on his behalf and say it's wrong, are you, Phil? Yeah, you're a weasel, Phil. This is the best you've got. To misrepresent someone's claim they haven't made and then take it apart. It's called a straw man. He pointed it out about 20 minutes ago. No, it is an apparent How can you say no, Mitchell? Because it's an apparent distance. Phil Bell, No, Mitchell, why do we have to I'm keep talking going about over and your over? diagram. Can you, if you had a value for X on... He's not claiming to measure Y, Phil. It's that simple. You need him to so you can say he's wrong. But who cares? Even if it was claimed to be measured by him and you said it was wrong, would that affect how you measured a flat plane to get your position on a flat plane with 90 degrees to the ground position of the sun when you measure its angle? Because that's how it's done. The angle's measured, not its height. Your diagram and a value for theta on your diagram, would you be able to work out Y? Would you be able to? Yeah, but he isn't. He hasn't claimed to. But you're asking if he could and would he? Would it? You're begging him to do it for him? Yeah? Would you do this for me so I can debunk it? Would you do that for me, please, Mitch? Would you do it for me? On your diagram. No, he wouldn't, because he doesn't need to. If it's an apparent object that we're Just trying answer to... the question, please, Mitchell. Yeah, this is my stream, Professor Phil Bill. You're not going to tell me what to do in my stream. I'll come on your stream for 5,000 Australian dollars and you can dictate what we're going to be talking about. But what we're talking about right here is the distance to an apparent object. Godzilla37 says, did you see that? Professor Phil Bell almost caught clue. Better luck next time, Professor. And there's one more super chat. Just bear with me. Resident Felon gives me £4.49 to say Mitchell is a legend.com. All right. Professor Phil Bell, can you just give us any evidence to that sun being tangible and physical to derive? Plenty of evidence for that. Plenty. Okay, let's go through it, and then we can get back to the First of all, claim. the sun outputs it's 3.9 by 10 to the 26 joules per second of energy. And that lends tangible physical evidence to a sun? Absolutely. Cannot do that unless it's a tangible physical object. Do you know the distance to the sun in your... And? So, does that mean you've got distance? Because you're the one claiming it, Phil. He's not. He's made it explicitly clear he's not claiming the distance. Now you're saying, well, I can justify how tangible it is, therefore what, you can get distance? So let's say your method for getting it, not your non-method that Mitch didn't claim for how he can't get it. Your claimed heliocentric model and how we got it? Well, the claim is it's 93 billion miles, 150 million kilometres. Right, so now we've got a claimant with a claim. It's you, Phil. Yeah, not your straw man that you tried to burn and failed. Go on, John. Even within their measurements, they claim only an apparent position and an apparent size. So, like, what has Phil Bell done? Well, it's a non-sequitur. He's denied heliocentrism. Yeah. Communicate in English easily. Use Grammarly and feel
Ecuador. The subject is celestial navigation. Sean Hawkins in the chat is spewing a lot of bullshit. And it's almost like he did not listen to the first part, to the initial part of this video, where it is clearly stated that altitude is measured in degrees, in terms of angles, from 0 to 90, from the horizon, the baseline, to the zenith, straight above your head, not physical distance in feet or kilometer. It's never about the distance to the sun in feet or miles. So why isn't he sticking to the subject that the whole thing started on, which is celestial navigation? It's angular distance. It's never for the feet or miles or distance to the sun in those terms. I'll read out the Smithsonian reference again. A sextant is used to measure the altitude of a celestial body above a horizon. So what a coincidence. Exactly the same thing gets mentioned here in the video also. Exactly what Sean Hawkins doesn't seem to get. Horizon line of reference. Altitude in this case is a special use of the word describing an angular measure, not a distance in feet above sea level. So, let's focus on a couple of words. Sea level. What does that mean? Well, it means Earth's flat. Because you wouldn't get this 90 degree below the sun to your position if Earth wasn't flat. Furthermore, the Smithsonian makes it explicitly clear that in the subject matter being discussed and debated, it's not measuring a, quote, distance in feet above sea level, end quote, the Smithsonian. बहुत clear है ये सब कुछ, so I'm not translating everything in Hindi like Chanakya did in David Weiss' video. A literal translation of every single word. David Weiss directed him like, now you go. Now it's your turn to translate. My God, could never do that. But बहुत ही clear है यहाँ पे जो भी बात हो रही है. I'll just continue. But Phil needs to tell Mitch that he is claiming it. Not relevant, Phil. It's just a straw man you need to burn. Why do you need to burn it, you ask as an audience member, Phil? Well, because you've got a claim of height and distance. 93 million miles, you just told us. So you said you hadn't got any claims, but lie number 2, you absolutely have. You've just made your claim of your height to your son that you strawmanned him with explicitly clear with a number that you can't prove, and we can definitely debunk. Can't we, Phil? Because you'll need an R value derived also from a flat plane to extrapolate out that 93 million miles. You'll need Kepler's third law of interplanetary motion to give you scale, and you'll need to superimpose the R value you got from a differential equation from sea level and eye level to superimpose onto Venus to use Kepler's third law to give you distance in his scaling values. Once you've got all of those presupposed values in place, you can then declare, based on a whole string of nonsense presuppositions, that 93 million miles is the distance. So as I say, we can debunk your claim that you are making and had to lie about while you misrepresented something your opponent was not claiming to say that he was claiming it and you were going to debunk it. Fail. But you lied about having a claim there, Phil, didn't you? You made it explicitly clear you had no claim. Yes, you do, you lying shit. You claim 93 million miles height. Mitch doesn't claim a damn thing. He shows how celestial navigation proves Earth's flat. You ignored it, altered the image, and then asked a new set of questions about your strawman claim he wasn't making.
This is what you've got to do to be a bluff. Lie, cheat, scam, strawman your way to victory. But you don't win that way anymore, do you? Mitch is smarter than you, Phil. So he's caught you at every single chance you've taken and thrown it right back at you, exactly as you deserve. Good on you, Mitch. Phil's a clown and you're showing it. Did you know that we had to first presuppose that we're living on a spherical Earth with a radius, and that light in the sky, Venus, was assumed to be more than a light in the sky. It is assumed to be the exact same size as Earth, the sister planet, if you will, with the same radius. And then we observed the Venus transiting the sun because we presupposed that we were living on a spherical Earth. We presupposed that Venus was a spherical planet in the sky, and we presupposed that they were distances and sizes to be obtained. And we used Kepler's third law of interplanetary motion, after pre-assuming, begging the question, all those things, to get the size of the sun. And then we derived the distance of the sun. So you tell me, why are we begging the question? Why do we not have physical measurements, physical sizes to these things? We do. Why did we have to beg the question in the first instance? We don't. What's changed? What's changed since then? How have we got physical evidence Radar. of the distance? So that thing by Christian Huygens, how they looked into their hearts and they said, yeah, that's definitely a little ping there. Radar, that's one of them. So how did they know where to look in that little radar image? Did they have a good idea? Did they have a good idea using what I just said, begging the question of 93 million miles? If you want to get the details, go and look it up. Sorry, if he wants to get the details, look it up. I'll take that as you're relinquishing your opportunity to prove your claim. Now, the radar return rate would also be based on a heliocentric presupposition to give you the timings that you were looking for. So, in terms of where you say you will receive a return radar signal, your timings came from the exact same list that Mitch has already given you and I've just given my audience. So Kepler's third law of interplanetary motion, Huygens' assumptions of Venus having the same R value as Earth. Those assumptions will still be in place, but your assumption that you can look in a certain time period for the return signal that you're claiming you get with radar. So you still have to beg every single question that was already begged, and then beg one more, that you already know where the timing will be when you look for it in that time period. So begging the question fallacy on steroids is your reply to him, and if it's challenged, just go and look it up yourself. Is that your standard, Phil? Go and look at it yourself. He shows you a diagram of how Earth is being measured flat and navigated flat, and you tell him, by your concession, that you're banking on it being flat. But when you come to tell people about radar, your standard is, yeah, radar. Well, what about radar? Well, you don't give him any explanation, but I do. And it's the same as Mitch's explanation about you begging the question of all those presuppositions to look for the timing values. But your answer isn't, no, we've got the timing values and we look. There you go, Sean. Flat Earth Debate 1941, Uncut and After Show. Mitch versus Professor Phil. 4 hour 49 minutes. Uploaded 5 days ago. Look in those timing values to see where they've got the return signal for the radar. No, you don't do any of that, do you, Phil? You tell him to go look it up. What prick? What useless prick. Sorry to interrupt, but I love radar because it's a line of sight technology. It's a flat Earth proof. Correct. Indeed, but the way they'll spin it is into the timing values that I've just explained. We're begging the question in the first instance and we're the same objection. Oh, hold on, no, because that's also a proof as well, because orbital mechanics requires on a plane to reference to utilize it. So the assumptions of Kepler required a flat Earth as well. Glad you're here. Both of you. This is what I was talking about. Assumptions of Kepler, upon which entire orbital mechanics is based, using which we send satellites and probes to the moon and Mars and God knows where else, which is in direct violation of the second law of thermodynamics. If rockets can penetrate
the atmosphere of the Earth and go into the vacuum of space, then so can gas molecules in the atmosphere. That's how gases behave. You cannot have gas pressure without a container. All roads lead to flat Earth. I'm glad you're here. Right, our current tip for 2023 is that all roads lead to a flat Earth. So every time we get into the begging the question fallacy that I used to object to with my panel members, they're now doing it to me. No, Nathan. You know, you're telling him how he's assuming a spherical surface. No, he isn't. He's assuming a flat surface. Same flat surface he's assuming in this diagram, by coincidence. I've looked it up. I'm detailing. I asked you the question and I gave you the answer. You didn't give him an answer. It was another baseless assertion fallacy, Phil. Telling him to go look it up himself is a baseless assertion. Detailing it to a T. I know it's uncomfortable for you to go through how we got the distance. It's not uncomfortable at all, Mitchell. Okay. Well, then why didn't you do it? You told him to go look it up. Now he's grabbed the mic and taken the opportunity to humiliate you. And let's go through it. We have a little bit of a chat. I'm actually interested in this image that you put. I know that stuttering, lying bastard Phil Bell has to say is his when it's not. What were you about to say? That you put up on screen? No, Phil. You altered it and then gave it him back, so you could make your little straw man argument about the height of the sun that no one needs it. Remember? Right? We got the Smithsonian reference up on screen and read out a very specific part about altitude. Altitude in this case is a special use of the word describing an angular measure, not a distance in feet above sea level. What's that you say you could calculate for y in this here diagram that I altered? Right, Phil? Straw man using asshole. Looking for a free project? Good morning. Thank you. And all things go in a downward bias. Fields of astronomy, cosmology, or astrophysics. Right? Better late than never, Mighty Mush. Thank you. So this is when Nathan's live show started. So far we were listening to the pre-show. And right at the outset, Nathan asks one of the house cleaning questions about gravity. And this is where I am going to end the video also, after listening to the point about gravity. And that's where we are with Sean Hawkins here also. According to Sean Hawkins, the warping of space-time. I asked him what's gravity. He said, the warping of space-time. We experience this on Earth with mass attracting mass. All formulas for gravity work in practical use. The Cavendish experiment confirms this. I'm sorry, are we in 2014 or 15? I can't believe this. Sean Hawkins, you're kind of stuck in time. You haven't moved forward. There were so many different roads back then. But do you know what has happened now? All roads lead to flat Earth. Thank you for saying hello. Any scientific evidence of gravity? What's gravity? Fine. That's exactly what I asked. Sean, come and tell me. I will extend my live stream if you come and join. Link is in the pinned comment. All things go in a downward bias? No, cloud.
No? Any single viable hypothesis from any of the fields of astronomy, cosmology, or astrophysics? सो फिर से टाइम आ गया है अपने आप को प्लग करने का बिफोर आई एंड दिस लाइव स्ट्रीम कि लाइव शोज़ में तो पिछले एक साल में इट इज़ 24th September once again. That's when I started with my first live stream. तब से लेकर अभी तक this is the 9th one. Not bad. Almost once every month or so. लेकिन मोस्टली ये देखो आप पिछले 1-2 महीने में ही 6-7 हुए हैं. उसके पहले कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है. एंड स्ट्रेंजली इनफ अभी बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा था विच इज़ वाई आई डिसाइडेड टू डू दिस एज अ काइंड ऑफ अ distraction in the sense something that I like doing and that takes my mind away from all the vagaries of life. Anyways, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं साइंस की ही बात करता हूँ और मेरे कई सारे पुराने वीडियोस ऑफ द साइंटिफिक मेथड आप यहाँ पे देखो साइंस सेज नथिंग, डू यू इवन साइंस ब्रो, द डबल स्लिट, ये सारे वीडियोस में आप जाओगे तो आपको क्या बातें मिलेंगी अभी जो एग्जैक्टली नेथन ओकली बोल रहा था. कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, evolutionary biology, paleontology, these are all pseudosciences. Astrology also, let alone astronomy, a sister branch of astronomy. Right. So ये point flat earthers के लिए क्यों important है? Because flat earthers claim that gravity is pseudoscience. बहुत सारे और चीज़ें, ग्लोब इज सूडो साइंस, फलाना डिमकाना, कुछ भी चीज़ को सूडो साइंस बोल देते हो. जैसा अभी शॉन हॉकिंस कर रहा था कि अर्थ का कर्वेचर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वो मेजर करने वाला है. बट व्हाट वी एक्चुअली डू मेजर आर फिनोमेना. हम उसी पॉइंट पे अभी फाइनली आ गए हैं. लेट्स जस्ट हियर फॉर अबाउट अ फ्यू मोर मिनट्स. No science. You mean from those pseudoscience categories? Yes, the pseudosciences. Here one Cosmology or astrophysics. Viable hypothesis from any of the fields of... No? Any single viable hypothesis from any of the fields of astronomy, cosmology or astrophysics. No science. You mean from those pseudoscience categories? Yes, the pseudosciences. Apparently not, because they have no validity to their claims. It's just rhetoric. What would give them validity? Philosophical, conceptual, conjectural. See it, and I believe it. Okay, who can answer me this? Why would we ask for 4 straight years now for scientific evidence? Why would we ask for any single viable hypothesis from any field of astronomy, cosmology, or astrophysics? Why would we ask for a hypothesis / scientific evidence? They're claimed to be natural science. Because they claim to be natural science. Okay, very good answer. Didn't think we would get that quickly. What is natural science? Don't make me answer this one too, guys. Pardon me, I'm driving. That's why I'm sorry. Study of the physical and natural world. That's what we're dealing with. The subject matter of flat Earth. Yeah? If you try and prove that we're on a flat plane, it is excluded from scientific inquiry. Anybody tell me why? There is no cause and effect relationship. Perfect. Man, we're getting through these real quick.
Get it, Sean? It's almost like I preempted your thought. It was already coming here in this video. And that's the point where I had thought that I'm going to end my live stream. So I hope you got your answer. It's not a valid question to go through the scientific method. Because you are not making a cause and effect hypothesis. You are not observing a phenomena. Flat Earth is not a phenomena. I'm putting a lot of stress, but maybe grammatically I should be saying phenomenon. Anyways, besides the point. The point is, it's not a phenomena. Flat Earth is not something happening. Didn't expect this. Bringing a big smile to my face there, Jorge. Okay. Because it's not a cause and effect relationship. It's a concrete noun. So what is within the purview of the scientific method? The empirical method? Yeah, what's observable? Maybe it's the word purview. Observable. What is the repeatable? What would we testable, utilise the falsifiable. scientific method for? To validate Any cause and natural effect. occurring Perfect. ph- He's answered. He's any got there. He's got there. natural He's got there occurring first. He's got phenomena. there. Hello. Say that again, please, Jorge. To establish a cause and effect relationship. To elucidate the cause of an effect. Okay. That process, the elucidation of the cause of an effect in the physical and natural world, that would be a natural phenomena. So, science is the elucidation of the cause of naturally occurring phenomena. Flat Earth is not a phenomena. Globe Earth is not a phenomena. Tree is not a phenomena. A phenomena is something happening, an occurrence. Something that you can see occur and go, I wonder what caused that. That's where science comes in. Okay, so with all that being said, the next statement will offend some people. Science is very, very narrow. That is to say, there are a finite amount of things that you can actually put through the scientific method itself. Because very often, concrete nouns, man-made objects, cannot be put through a method that is trying to elucidate the cause of natural phenomena. Because if it's not a phenomena, you're not going to be elucidating the cause of it. Because it's not a phenomena to elucidate the cause of. And if it's man-made, you already know the cause of it. A man made it. So all you can put through the scientific method is naturally occurring phenomena, so that you can find out the cause of it. Any questions? We will deal with a few questions here by Sean Hawkins. And every single one of them was already covered by Nathan. I'll still read a few of them. So when I asked what's gravity, he was like, yeah. I made a video answering all of Nathan's housekeeping questions on my old channel. I'll have to remake that video and do a new live stream. Sean, to be honest, people in the panel, FED panel, do not think so highly of you. You have allegedly said a lot of things. I wasn't there to listen directly, but yeah, allegedly you have said quite a few stupid things, which you continue to do here also.
You are asking simple questions, grade school level questions, right? And you say they aren't pseudoscience. Astrophysics, cosmology, astronomy, they are not pseudosciences, which is why I asked, what is science? Nathan briefed about the same. What is the scientific method and what can go through the scientific method? So, Nathan thinks that anything man-made isn't natural science. That's his error. He just clarified. The cause of anything man-made is man. And anything which is man-made is obviously not a phenomenon. You know this person? Brenda? She thinks a shoe is a phenomenon. And finally, nothing is left to be said after this statement, which is science doesn't prove things. Nathan makes up his own rules. My God. Nathan has a very simplistic, almost childlike knowledge of the scientific method and science in general. At least he knows that science proves things. You don't seem to get that. You don't even have a childlike understanding, childlike knowledge of the scientific method. The whole debate between Nathan and Jaren, two flat earthers, was on this topic. Nathan is not up against Globers only with this point. We are having to deal with flat earthers who think science doesn't prove things. My God. Now I shouldn't be following anyone who knows so little about science. Stop listening to Nathan. Science is observing and testing stuff. Testing how, Sean? I've asked you to come and join this stream to tell us how. Tell us all about the scientific method, about gravity, about black swan, about celestial navigation, everything. But maybe some other day. In the end, why did I show you Brenda? That brings me to the end of the stream. This guy, Jaren, जिसको कि नेथन ने कुछ हफ्तों पहले, 1-2 महीने पहले बहुत अच्छे से इसकी क्लास ली थी. इसके साथ नेथन का डिबेट भी हुआ था जिसमें जेरन वाज टेकिंग द स्टैंड दैट साइंस डजंट प्रूव थिंग्स एंड नेथन ऑब्वियसली सालों से हम बात ही करते आ रहे हैं यही सब चीज़ें. मेरे भी वीडियोस मैंने वही दिखाया कि साइंटिफिक मेथड फ्लैट अर्थर्स को यूज़ करना है अगेंस्ट ग्लोब अर्थर्स टू से दैट ग्रेविटी इज सूडो साइंस. इवन थिंग्स लाइक एवोल्यूशन सूडो साइंस है. जो भी वो क्लेम करते हैं साइंटिफिक प्रूफ, कोरियोलिस वगैरह, ये सब कुछ फ्लैट अर्थर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट आउट करना है कि दिस इज़ नॉट साइंस एक्चुअली. बट बिफोर यू डू दैट you have to know what science is, what the scientific method is, what are the steps of the scientific method. The scientific method, not just any scientific method or a scientific method out of a bunch of many. It is the scientific method जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हो ग्रेविटी सूडो साइंस है. तो could you please define what you mean साइंस. तो ये वीडियो कोई पार्ट में प्ले नहीं करूँगा. जेरन और ब्रेंडा के बीच में जेरन के ही चैनल पे जस्ट 3 दिन पहले जो वीडियो हुआ था, लेकिन नेथन ओकली ने खुद इस वीडियो को कवर किया था जिसमें कि जेरन, शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उसके आगे वीडियो जो आया था उसमें जेरन की तारीफ में का टाइटल भी था और डिबेट में भी, वीडियो में भी वही बात हो रही थी. जस्ट बिकॉज जेरन ने ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट का एकदम जो जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए अच्छे से समझ के वो काम किया. ना व्हाट इज़ द ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट, ये सब कुछ मैंने वीडियो के शुरू में ही बात करी थी. यहाँ पे भी जस्ट लाइक सेलेस्टियल नेविगेशन में भी ग्लोब अर्थर्स को मानना पड़ता है, फ्लैट अर्थर्स सही हैं. यहाँ पे भी ब्रेंडा को अल्टीमेटली आके ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट में मानना ही पड़ा कि यस, उसके अकॉर्डिंग तो
It is not a globe. She admitted. Right. तो ब्लैक स्वान, सेलेस्टियल नेविगेशन, गैस प्रेशर नॉट पॉसिबल विदाउट अ कंटेनर, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर अपने वीडियो में बात करेंगे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई लाइव स्ट्रीम. अच्छा था. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन? आई थिंक 2 घंटा तो क्रॉस कर ही गया. 2 घंटे 20 मिनट. Not bad. But yeah, this here is your proof of flat earth. As simple as it gets. इससे सिंपल और आप कुछ सोच नहीं सकते हो. फ्लैट अर्थ का प्रूफ. इसीलिए मैंने पिछले वाले तो पूरे वीडियो में ही कंसंट्रेट किया था. उसके पहले भी चाणक्य तिवारी के चैनल पे जाके अपने चैनल पे सेलेस्टियल नेविगेशन वाला पॉइंट समझाने की कोशिश करी है इंडिया के फ्लैट अर्थर्स को. आज कमल मोगा भाई आए थे तो उन्होंने भी अप्रिशिएट करा कि कितना बढ़िया पॉइंट है, कितना सही पॉइंट है, जो सब समझते हैं, बस उसको अप्लाई करना है इन प्रैक्टिकल लाइफ. सो थैंक्स कमल भाई फॉर बीइंग हियर. शाउट आउट टू नेथन ओकली 1980. शाउट आउट टू क्वांटम इरेजर. शाउट आउट टू आरविन. आरविन मेरे चैट में हमेशा रहता है. एंड शॉन हॉकिंस, यू वुड बी मोस्ट वेलकम इन एनी फ्यूचर लाइव स्ट्रीम, बट डू कम विथ सम सॉलिड पॉइंट्स. मैं इधर उधर के पॉइंट लेके मत आ जाना. चलो, Saturday night well spent. See you all in the next one.